So good morning everyone once again. My name is Devasis Sahu and today I'm going to discuss a topic that is the last part of this chapter, that is the anatomy of flowering plant. ठीक है? तो ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଆମେ ପଢି ଆସୁଥିଲେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ରେ ଚାପ୍ଟରଟି ପଢି ଆସୁଥିଲେ. This chapter belongs to standard 11 ଆଉ 11 class ରେ ଚାପ୍ଟରଟି belong କରୁଛି ତମର 6th number chapter that is called as anatomy of flowering plants. ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କୁ ପଢିବା. So I welcome you all to this DSSC online academic support program ଯୋଉଠି ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସ କରିବା ଟପିକ ଆଜିର that is the secondary growth in dicot roots and dicot stems. ठीक अछि तो क्वेश्चन ने जो टॉपिक रे ही ना लिखा है हमें कहा विषय पढ़िबा अबाउट द डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम. दैट मींस ये सेकेंडरी ग्रोथ टी मोनोकोट प्लांट रे होनी बोली हमें एटा स्टार्टिंग रो माने ही चलिबा. ठीक अछि सो दिस इज द एनाटॉमी चैप्टर. आउ एनाटॉमी चैप्टर रो वेटेज रहउची कि ईच एंड एवरी ईयर नीट रे बा तुमे ओयूटी एंट्रेंस देखिबो नीट एंट्रेंस देखिबो को भी मेडिकल एंट्रेंस देखिबो 2 to 3 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इटसेल्फ. तो ये चैप्टर तुमको 12 मार्क रो वेटेज नहीं चली. तो आ सहित ये चैप्टर रो प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस कोठी आसीबो ना जेबे तुमे सेकंड ईयर रे माने आदि को ठीक वर्षे परी जेबे तुमे 2027 जनवरी रे जब तुम प्रैक्टिकल एग्जाम दोथिबो सेठी भी तुमको एठु किछि क्वेश्चन पचारि पारंती जे एक्सटर्नल नंबर सेठी आसीबे. हैं तो चैप्टर को दीटा पॉइंट ऑफ व्यू रो पढो बोल से मन देई जानो. फर्स्ट ऑफ ऑल that is it is important in your NEET entrance 12 mark रो वेटेज नहीं चलची. And second of all, are external जो मुझे ऐसे तुम क्वेश्चन से पूछा चाहिए कि what do you mean by growth, primary growth कौन, secondary growth कौन, monocot, dicot ये सब तो पढ़ी. तो ये जो क्वेश्चन थे जो चैप्टर ना जो तुम मन रखी थी वो anatomy of flowering plant. So what do you mean by flowering plant? फर्स्ट क्वेश्चन ही एठो आसे फ्लावरिंग प्लांट कहले कोन बुझछ. बहुत टाइम हमें बहुत लेंदी प्रिपेयर नहीं की जाइथिबा कि क्वेश्चन टफ आसीबो क्वेश्चन मे बी से डेप्थ से पचरिबे बट बड़े बड़े बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन थाए और से बेसिक्स क्वेश्चन रो आंसर हमें सेटे फड़फड़ाई जाउ ताका आगे से हमर कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करंती. तो चैप्टर ना अछि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लागतो कि सो एनाटॉमी पढ़ दे के जाईची एनाटॉमी आंसर मु दे पारिबी. But the question can become from what do you mean by flowering plant? So can I expect any answers from you? What do you mean by flowering plant? Dear students, start with a question, no? Let me see the participants. So any answer from you? What do you mean by flowering plant? I'm a plant kingdom already पढ़ी. In the plant kingdom, we have studied about Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta. So, can you tell me what do you mean by flowering plant? Flowering plant or meaning के मते कहि परिबो? Any one of you? Then हम chapter को entry करिबा because this is the end part of this class. A chapter रे एटा end part आसीबो. That means the end part of first question आसला कि what do you mean by flowering plant? Any answer? नहीं. No answers. Okay, so let me tell you the meaning of flowering plant is basically angiosperm. अब angiosperm को flowering plant बोली कहते हो. तो हम जो plant kingdom में पढ़ते थे about Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta and Spermatophyta. तो Spermatophyta में देखो दो प्रकार पार्ट है सिला. One is जो gymnosperms, second is जो angiosperms और ये जो angiosperms अच्छा नहीं था कोई हमें कहता हो flowering plant बोली कहता है वो higher plant बोली कहा जाता है. Those who are producing food तो कहि परिबेनी. Food तो सब plant formation करते हैं by the process called photosynthesis. Each and every plant produces food. ठीक है जी, in the form of glucose, in the form of starch. The flowering plant ताको कहिबे those are bearing the flowers. And what is a flower? Morphology हम already पढ़ी थी. Flower is the reproductive organ of the plant. Flower is a modified suit of a plant. ठीक है जी, गोटे सूट टा मॉडिफाई हेके फ्लावर हिची बा यू कैन से फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. गोटे प्लांट रो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अछि और दोस प्लांट्स बियरिंग दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स. हम ताको आमे कोन कहितो एंजियोस्पर्म्स बोली कहितो. ठीक अछि तुमर जो आउ 2 मास पर तुम सेकंड ईयर स्टार्ट करबो तुम कॉलेज माने करे हायर सेकेंडरी स्कूल्स रे एंड सेकंड ईयर ऑफ बॉटनी रो फर्स्ट चैप्टर बिलोंग करछि काहाकू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट.
You are going to study about sexual reproduction flowering plant. So the question is, what is the meaning of flowering plant? So flowering plant means it we are going to say about angiosperms. Okay, got it? Okay. The then as like what is anatomy? तुम already chapter पढ़ी सारी पिला माने. What do you mean by anatomy? Anatomy कहले तुमने कौन बुझ्छ? दुईटा वर्ड थिला बायोलॉजी रे गोटे मॉर्फोलॉजी गोटे एनाटॉमी तो ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड रे पार्ट भी टिके टिके पढिथिबो एनिमल किंगडम रे भी पढिथिबो प्लांट किंगडम रे भी देखिछे तो व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी बहुत इजी क्वेश्चन है एनाटॉमी माने हे गला इंटरनल अपीयरेंस and the how the plant looks like from the within from the inside the study of internal structure. Good, Priyasa. The correct answer is study of internal structure is called as anatomy. So today in this chapter, I'm going to summarize the entire part, anatomy of flowering plant, but I'm strictly focused करें कहाँ पर है secondary growth in dicot root and dicot stem. So all you can see of wood, there is a wood structure देखी पार तो plant रो trunk को गोटे हमें TS section काटे ही देखी छे. ठीक अछि गोटे प्लांट रो ट्रंक जो पार्ट हे गला तार जो वुड पार्ट जो हम गोटे ट्रांसफर सेक्शन नै देखि छै एठी आ एठी तमे देखि पारथो डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स अछंती एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स आर देयर तो से कोन लेयर्स सब अछि से लेयर्स को हमें वन बाय वन रिवील करिबा आज का क्लास रे so this is called the secondary growth आउ again for गोटे बेसिक क्वेश्चन आछो what do you mean by growth in your biology, in your first year syllabus, in your 11th class syllabus, unit 4 रे गोटे chapter अछि that is called as plant growth and development. तो सेठू गोटे क्वेश्चन आसीबो what do you mean by growth? Growth तमे काहू कहबो? तमे पढिबा जे secondary growth, secondary primary तमे बुझी पड़थबो primary आगा हिथिबो then secondary हिथिबो but what is this growth? Growth कहले तमे कोन बुझछ? Can I answer any answer to this question? Can I expect any answers? Yes, dear participants, it's a very easy question. Any one of you want to tell this answer? What do you mean by growth? The class starting में कहीं की question answer करूँ because basics is very important. So basics टा clear हेले ही हमें आगो jump कर पारिबा. Growth रे हमें कहाँ को include करते हैं? What do you mean by growth? Okay, so let me tell you once again. Growth माने कौन है गला? The growth is increase in size, increase in mass, increase in number, increase in density, increase in volume. को भी जिनिस रे जदि कि increase होची size रे that is called as growth. बुझपाइला ना बुझपाइला ना growth केबे reverse हबो नै. ग्रोथ सब आगू बढ़ कंटिन्यूअसली ग्रो कर इंक्रीज होची सेल रो नंबर रे इंक्रीज हैला सेल रो साइज रे इंक्रीज हैला सेल रो मास बढ़िला सेल रो वॉल्यूम बढ़िची सेल रो डेंसिटी बढ़िची सेल रो हाइट बढ़िची प्लांट रो हाइट बढ़िची तो को भी जिंस रे हम ग्रोथ ताकू ही कहबा जेते को जिंस रे इंक्रीज हेसी तो इंक्रीज इन साइज इंक्रीज इन नंबर इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज इन डेंसिटी ठीक अछि ये सब पार्ट को हमें cumulatively कौन कहूँ ग्रोथफुली कहूँ क्लियर तो आज हम पढ़िबा कहा विषय सेकेंडरी ग्रोथ कथा पढ़िबा so let's quickly start about secondary growth first of all ये secondary growth को जिबा पूर्व मोर किछटा बेसिक स्लाइड्स तो मु कहबी आ पर से पिक्चरल स्लाइड ही आसीबो डोंट माने ए जो स्लाइड देखि के एते थर जिंस पढ़िबा पड़े बोल भाबनी आगो मु तो मु सिंपलीफाई कर देबी कि ग्रोथ रे कोन फंडामेंटल्स अछि ततर किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम जनेबी कोन क्वेश्चन आसी परछि केते इजी क्वेश्चन आसी परछि और देन हम जे को पार्ट को रिगार्डिंग द पिक्चोरियल स्लाइड को हम जी तो फर्स्ट अगर डेफिनेशन में स्टार्ट करें फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई एम काइंडली रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ एनोटेशन इन द स्लाइड चलो आउ एबे के एनोटेट करि परिबनी तो हमें वर्तमान पढ़िबा का विषय रे रिगार्डिंग द definition of secondary growth. So what do you mean by secondary growth? First of all, the slide is visible to all of you. Slide ठीक से देखा जाओ सामान पिला माने. Yes, it's perfectly fine. Okay. So secondary growth माने है गला ठीक होना. The secondary growth है गला कि the increase in girth or thickness of root, stem and the branches in perennial woody plants by the activity of vascular cambium and the core cambium is called as your secondary growth.
ठीक है जी सेकंड को से कौन कहला द इंक्रीज कहथिल ना ग्रोथ रे माने कोन हे गेला ग्रोथ रे माने को भी जिंसटा बे इंक्रीज करिवो द इंक्रीज इन गर्थ माने एटी कोन हे गेला ना प्लांट र जेमति गोटे हाइट अछि सेमति गोटे गर्थ अछि गर्थ इज द कैनोपी गछ साइड ता केमति ग्रो कला अबिका लैटरल ग्रोथ ताको हम गर्थ बोली कहूचे गोटे हे गेला अपवर्ड अपवर्ड कोन हे गेला ऊपर अछि मेरिस्टेम व्हिच काइंड ऑफ मेरिस्टेम सूट एपिकल मेरिस्टेम तळे रहला रूट एपिकल मेरिस्टेम तो एपिकल मेरिस्टेम ऊपर ग्रो करने हेल्प करिवो ठीक अछि से अपर डायरेक्शन में ग्रो करिवो तार लेंथ इंक्रीज करिवो हाइट इंक्रीज करिवो बट लैटरल मेरिस्टेम जो रहिले से माने हेल्प करे गर्थ को इंक्रीज करिवे तो व्हाट इज द सेकेंडरी ग्रोथ ना इट इज द इंक्रीज इन गर्थ और यू कैन से द थिकनेस of root stem and branches so eight busariboni I'm not including I'm not saying anything about the leaves are secondary growth hey not hai secondary growth कोठी हेते in case of root in case of stems in case of branches ठीक अछि each and every word ऊपर फोकस करिवो एठो भी क्वेश्चन बनि परिवो then and से branches हो बा stem हो बा root हो सेटा कहा कथा कहछि about the perennial woody plants not about all the plants we're not talking about like the Thallophyte, bryophyte, pteridophyte. No, we're talking about gymnosperms. We're talking about angiosperms. And that too, co-plant, it's not a seasonal crop. It's not an annual plant. It's a perennial. Perennial माने जी वर्ष वर्ष जाएंगे रही पार्ट जेमते बड़ा गच्छ उस्ता गच्छ ए गच्छ माने को पेरिनियल प्लांट रे एंट्री करिवे तो माने वर्ष वर्ष जाएंगे 1000 वर्ष जाएंगे ग्रो कर परिवे पेरिनियल वुडी प्लांट्स by the activity of vascular cambium. I hope तुम सब जानते हो what is vascular cambium as well as core cambium. तो को भी टॉपिक को बुझिया पाई कि हम से टॉपिक को पांचटा बेसिक्स क्वेश्चन में डिवाइड कर दो तो पांचटा बेसिक्स क्वेश्चन ही आगो जाए कि हमको हेल्प करता है जिनको क्लियरली क्लैरिटी सहित बुझिया पाएंगे अब से पांचटा बेसिक क्वेश्चन कौन है पारे पिला माने ना फर्स्ट आसी जो व्हाट सेकंड आसी जो वेयर थर्ड आसी जो व्हेन फोर्थ को तमे जाई परिबो व्हाई and the last and the very important question is how it occurs. So if you able to answer these 5 questions then मु माने के चलीबी कि मु पढिथिबा जिंसटी बा तुमे पढिथिबा anatomy flowering plant तुम मन क्लियर हे जेछि तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आमे पढुछि आजि अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ तो फर्स्ट क्वेश्चन आसी अबिका व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ तो मैंने कहि देला माने इज इट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लियर है व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ ना किछि डाउट्स अछि तुमर एबे भी सेकेंडरी ग्रोथ माने कोन आसी बोली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स समय से सेकेंडरी ग्रोथ जानि पाइलो ओके so is saying yes sir okay the secondary growth है वाला कौन the increase in girth or thickness of root stem and branches in perennial woody plant is called as secondary growth चलो सुश्री saying also yes now second question where it occurs को जगह रे होची तो लोकेशन कौन को जगह रे हवा प्लांट रे कहा बिजरी से होची ना प्लांट रे जेटा हम देखियो जेंथे रूट भीतर होची स्टेम भीतर होची ब्रांचेस रे होची ठीक है जी आउट ए डेप्थ को जिबा ये को जगह होची द इंक्रीज इन थिकनेस और गर्थ ऑफ द स्टेम द रूट और द ब्रांचेस ए जगह जो ग्रोथ होई ताको हमें कोन को सेकेंडरी ग्रोथ बोली कहूची क्वेश्चन नंबर 3 आसीबो व्हेन इट अकर्स केते बेले होची मन रखिबो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आगो प्राइमरी ग्रोथ एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स बिना प्राइमरी ग्रोथ से सेकेंडरी ग्रोथ हे ही परिबनी आगो से वास्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन हेची कैम्बियम फॉर्मेशन हेची जाइलेम फ्लोएम बनिछंदी प्राइमरी जाइलेम सेकेंडरी जाइलेम ये सब बनि सारला परे प्राइमरी जाइलेम प्राइमरी फ्लोएम बनि सारला परे देन हमर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करियो आगो एपिकल मेरिस्टेम तार ग्रोथ कर देबो देन लैटरल मेरिस्टेम ता काम करा स्टार्ट करबा द डिफरेंट केमिति करछि हाउ इट अप्रोच हम लास्ट पॉइंट जिबा तो व्हेन आंसर है कोन ना after completion of primary growth तो प्राइमरी ग्रोथ रो कंप्लीशन हैला परे ही सेकेंडरी ग्रोथ हो बट इट्स वेरी बेसिक मु एपर्टर डेप्थ को जाइनी बेसिक्स में तुम मानो कहि चलछि फोर्थ क्वेश्चन आसेला व्हाई इट अकर्स ए व्हाई तार सिग्निफिकेंस को बुझुछि को भी जिंस को लॉन्ग टर्म पई के मेमोराइज करियो जे तुमे चाहउछ तुमको से जिंस रा व्हाई क्लियर करियो पड़िबो because if you know why it occurs
then तुम्हें बाकी सब जिनस क्लैरिटी पळाइ आसो कि व्हाई इट अकर्स, व्हेन इट अकर्स, व्हाई हाउ इट अकर्स, सब जिनस बुझ परियो। आगो व्हाई क्लियर करो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ए ग्रोथ होबार पछे रीजन कोन अछि। गछ तो अबिका लंबा हेई चलतिला, तार गर्थ काहे के इंक्रीज करछि, काहे कि तार कैनोपी ग्रो करूछि, काहे कि थिकनेस बढ़ुछि, व्हाट इज द नीड। आउ से पेरिनियल होछि कोन पई कि से ओडी स्टेम आसिला कोठो, ये सबुर आंसर आउछ सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ जदि हबनी देन गछ सेति स्ट्रांग हबनी, सेति स्टिफनेस ता पाखे आसबनी। आ गछ जो सपोर्ट करिया पड़ुछि, से जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल सिचुएशन को अबिका टॉलरेट करिया को जाउछि, से जिंस हे परिबो नै इफ सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट अकरिंग। आरो बहुत सारा सिग्निफिकेंस अछि, चैप्टर एंड आरो तुमको जणै देबी कि सेकेंडरी ग्रोथ कोन सिग्निफिकेंस अछि। आ सिग्निफिकेंस जानि गेले तुमरे पार्ट ता क्लियर हो जो कि व्हाई इट अकर्स, काहे के जिंसटी होछि। एंड लास्ट पार्ट हे गला कि हाउ इट अकर्स, हाउ इज अ मेकानिज्म पिला माने। आ मेकानिज्म को हम सिंगल लाइन रे डिफाइन कर परिबा नै, मेकानिज्म पई कि हम गोटा फ्लो चार्ट देखियो पड़े ए कोन जिंस होछि बोली। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि तुम माने ए बेसिक्स क्वेश्चन पचारो, तुम साइंटिफिक टेम्परामेंट रे क्यूरियोसिटी आनो, और का सहित लाइन बाय लाइन देखो मु कोन कहू चाहूछि। The increase in thickness or girth of the stem, the root or branches by the activity of, it kahar activity kotha padichi, of the vascular cambium, and the core cambium is called as the secondary growth. The secondary growth रे हमें kahar काम नउचे, activity के करचंदी, number 1 vascular cambium, number 2 core cambium। कोन ए जिंस केमति काम करचंदी we'll know in detail। The thickness of the stem is required, कौन पाई दरकार थिला, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दबा को जाउची। Why it is required, ना it is required to support the trees with increase in height and the weight of the stem and its branches। जेबे गोटे प्लांट टी ग्रो करछि, जेबे गोटे गछटी आगु जे ग्रो करछि, तार बे हाइट इंक्रीज करछि, तार ब्रांचेस माने अबिका एक्सपैंड करछन्ती, सेटे लीव्स आसुछि, फ्लावर्स आसुछि, फ्रूट आसुछि। तो नो डाउट तार बायोमास अबिका ग्रोथ करछि। आ जे बायोमास टी ग्रो करछि प्रोड्यूसर र, ताकू सपोर्ट करिबा पई कि, ताकू से प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करिया पई कि, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाइया पई कि, वी आर डिपेंडेंट अपॉन द सेकेंडरी ग्रोथ। द सेकेंडरी ग्रोथ र मेन फंक्शन हे गला कि सपोर्ट दबो। कहा को सपोर्ट दबो ना, ग्रोइंग प्लांट, इट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द ट्री with increase in height and weight of the stem and its branches। Yes, is it clear? Now, this support is achieved, a support टी होछि केमती, how it occurs, question number 5 को आसले अबिका। why सइला जानि पाइलो कोनटा होइछि बोली, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, को जगह रे होछि बोली जानि पाइलो, को जगह रे होछि इनसेटी, प्लांट र एनाटॉमी पढुछ ना, को जगह रे होछि, वास्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, आंकर एक्टिविटी रे कामटी होछि, ब्रांच रे, स्टेम रे, रूट्स रे। when it occurs after completion of primary growth, सेटा भी जानले हमें, काहे की होछि भी जानि पाइले, सपोर्ट करिया पई कि। now the last question arises here, how it occurs or how the answer देखंती। this support is achieved by the addition of new tissues by the activity of the lateral meristems, the fascicular or vascular cambium, and the core cambium, or you can call it as phalogen। तो से कोर कैम्बियम को फेलोजेन बोली कह जाए, वास्कुलर कैम्बियम को फास्कुलर कैम्बियम कह जाए। तो आंकर एक्टिविटीज अछि, जो पार्ट हम एठी पढिथिले कि नागर एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी माने कोन, टिश्यू फॉर्मेशन करछन, टिश्यू, what is tissue, that the group of cells having a common origin and doing a similar kind of function, this is called as a tissue। the tissue मानकर growth होछि आगु हम बढ़। the tissues produced by the lateral meristems are called as the secondary tissues। ठीक है, व्हाट इज सेकेंडरी टिश्यू, जे हम सेकेंडरी ग्रोथ पढुछ, तो सेकेंडरी टिश्यू कथा आसीबो। आ सेकेंडरी टिश्यू कोठु आछंती, फ्रॉम द लैटरल मेरिस्टेम। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, मेरिस्टेम जो प्लांट रे में देखुतिले, मेरिस्टेम्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। ताको ओरिजिन को देखिबा जदी, बेस्ड ऑन द पोजीशन, based on the origin, this meristems are of three types। one is your apical meristem, the location कोठु अछि, apex रे अछि। it can be the shoot apical meristem sam, or it can be the root apical meristem ram, the apex point रे अछि सेला apical meristem। नंबर 2 बसिला इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जहां को मोनोकोट प्लांट बने पाए देखतेले, ग्रास फैमिली पाखे देखतेले। तो इंटरकैलरी जोटा कि जो इंटरमीडिएट पोजीशन में रहेगा, इट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड सब लास्ट बसिला कहा दूसरे लैटेरल मेरिस्टेम। और लैटेरल मेरिस्टेम रे कैम्बियम फॉर्मेशन हबा, वास्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन हबा, जे आगु जाय के सेकेंडरी ग्रोथ रे हेल्प करियो। इज इट क्लियर, बुझ पाइला। the vascular cambium produces secondary vascular
tissue. Secondary vascular tissue से कौन आसीबे ना secondary xylem, secondary phloem से मान जिनसे आसीबे. The core cambium forms the periderm. Good word it asla periderm मन रखिबो. Phloem, phloem and phloderm. तीनटा part मिसिले हबो periderm. एक question एट बनिबो. 8 question आसीबो. What do you mean by periderm? The periderm equals to dash. तीनटा p मन रखिबो. Periderm में तीनटा p आसीला. गोटे गेला phloem. Number 2 is phloem and number 3 is phloderm. ये तीनटा को पिला मिसी गले हे जो पेरिडम आगो कहबे जंग डिटेल्स रे ये खाली बेसिक्स आ पर पिक्चर स्लाइड आसीबो तो इट इज कॉल्ड एज पेरिडम द कोर कैम्बियम फॉर्म्स द पेरिडम and woody plants the secondary tissues constitute the bulk of the plant and the secondary tissues take part in providing protection support and conduction of water and minerals तो एटी कोन को हमको सपोर्ट दोची प्रोटेक्शन दोची and major part ही गला कि वाटर कंडक्शन ने हेल्प करची और कहि पारे वाटर कंडक्टिंग टिश्यू रो ना कोन हे गला प्लांट रे स्कूल टाइम रे हम पढिया से पार्ट वाटर कंडक्टिंग प्रियस इज आस्किंग व्हाट इज कोर कैम्बियम देखियो पिला माने कोर कैम्बियम कथा कहिबा बिका फेलेम को हमें कहूचे फेलेम फेलोजेन फेलोडम से वर्ड रो पिक्चर साइड तो देखिबो सेकंड है ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलियन प्लांट एंड इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म अच्छा ए जो लास्ट वाला पार्ट तो तुम स्किप करिवो नाही काहे को स्किप करिवो नाही द लास्ट पार्ट रे गोटे एक्सेप्शनल क्वेश्चन अछि हम जानि छे कि सेकेंडरी ग्रोथ की कोठी होची इट अकर्स इन केस ऑफ डाइकोट प्लांट्स and it occurs in case of gymnosperms and starting हम कहि देले कि मोनोकोट रे होएनी बोली but yes there is an exception किछि मोनोकोट प्लांट एमपी भी अछंदी जो माने सेकेंडरी ग्रोथ शो करचंती not as a whole but तांकरे किछिटा पार्ट रे किछिटा ऑर्गन्स से माने पार्ट शो कर देंती कि स्टेम हे गला गोटे मोनोकोट प्लांट अछि त ना हे गला यूका मन रखिबो गोटे मोनोकोट प्लांट हे गला यूका दिस इज एन एक्सेप्शन ना स्टार मार्क कर दीजिए एक्सेप्शन पार्ट some exceptional monocotyledons for example yucca increase the thickness of their stem मन रखियो monocot plant ता ना हे गला yucca आउ तार stem part से कोन शो करछि secondary growth शो करछि occurs by special form of secondary growth क्लियर तो ए पेज लिखा दा ईच एंड एवरीथिंग हम बुझी पाइलो कोन जिंस होची कम केमती होची सेकेंडरी ग्रोथ कोड स्टार्ट हैला को जगह रे हैला व्हाट इट इज वेयर इट अकर्स व्हेन इट अकर्स why it occurs and how it occurs तो एटी जिंस क्लियर हे गला देन नोट क्वेश्चन आंसर मध्ये देई परिबो सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन डैश ये ला प्रीवियस क्वेश्चन एमता क्वेश्चन पकईची सेकेंडरी ग्रोथ कोठी एब्सेंट थाए इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स मेजोफाइट्स हैलोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स तो भाभी सर हमने क्वेश्चन पढ़ले रिगार्डिंग डाइकोट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म्स डाइकोट प्लांट्स किछटा मोनोकोट देखिले एले ऑप्शन पे अलगा आसिलानी ऑप्शन अछि हाइड्रोफाइट्स अछि मेजोफाइट्स अछि हैलोफाइट्स और जेरोफाइट अछि तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन Priya is saying hydrophytes would be saying xylem what is core cambium xylem nahi so Priya your answer is correct hydrophytes are the plants where secondary growth is basically absent can you tell me why in case of hydrophytes को माने बुझी पाइलनी हाइड्रोफाइट कोन मेजोफाइट कोन एपिफाइट्स कोन जीरोफाइट्स कोन को का माने कोन अछि नहीं हाइड्रोफाइट्स माने कोन एपिफाइट्स माने कोन हाइड्रोफाइट हे गला जो प्लांट्स which are present in water they are not woody yes they are excuse me sorry so they are present in water the stems are not woody and ता सहित ताको पाखे कोन अछि ताको पाखे फ्लोटिंग एरेनकाइमा अछि जे पानी द बोन्स को सपोर्ट करे पे ताको हेल्प करछि तो ये हाइड्रोफाइट्स कोन पाखे रे सेकेंडरी को देखा जाय ना चलो next part is the growth of the roots and stems in the length with the help of apical meristem is called as primary growth ये है first of all primary growth तापर क्या होता है secondary growth is the increase in girth of dicot plants and tissues involved in the secondary growth have two lateral meristem one is the vascular cambium second is the core cambium देखो ये डायग्राम को देखो बुझ पारिबो
तो प्राइमरी ग्रोथ रे कोन हेतिला एंड सेकेंडरी ग्रोथ रे कोन होची प्राइमरी ग्रोथ रे केवल कोन हेतिला ना एपिकल मेरिस्टेम माने टेक पार्ट करथिले एंड ए एपिकल मेरिस्टेम माने आगु जाई कि प्राइमरी ग्रोथ हेल्प करथिले रूट रे हो बा स्टेम रे हो तका हाइट को बढ़ाइछथि प्राइमरी ग्रोथ रे मझिरे जो पार्ट रहला पीथ से सबटु अधिक थाए जेबिकि ये जाइलेम आउ फ्लोएम माने प्रेजेंट थांती पैच पैच एक थांती आ आको पाखे के स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू अछि पैरेन्काइमा टिश्यू अछि बट सेकेंडरी ग्रोथ रे कोन हेगला ना इंक्रीज ऑफ गर्ड्स इन केस ऑफ डाइकोट प्लांट्स एंड इट इज सब टिश्यू माने इन्वॉल्व भेले जेमति कि ए एंटायर पार्ट मु कहि दे बार्क बोली जे गछर बाहर पटे थाए आउटर पेरिफेरल पार्ट जेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि तार भीतर एक स्मॉल अमाउंट कॉर्टेक्स तुम देखि परछो आगु जो कॉर्टेक्स टा बड़ा अमाउंट थिला जो फर्स्ट स्टार्टिंग कर तुम एपिडर्मिस तापर हाइपोडर्मिस तापर तुम पळे आसिला कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल पिच ए पार्ट जो आसिला कॉर्टेक्स पळे आसिला सभा ऊपर टा हेगला तुम एपिडर्मिस एई जो पार्ट तुम प्रेजेंट अछि कॉर कैम्बियम आ एई पटे प्रेजेंट अछि तुम सेकेंडरी जाइलेम तापर से प्रेजेंट अछि प्राइमरी जाइलेम तो सेकेंडरी जाइलेम टा बाहर पटो ग्रो करछि प्राइमरी जाइलेम टा भीतर पटो करछि देन ये गला भास्कुलर कैम्बियम जो भास्कुलर कैम्बियम रे मान सब ग्रो करछन्ती फुन भास्कुलर कैम्बियम भीतर फुन दी प्रकार कैम्बियम आसीबो तुम्हारा जो गोटे फैसिकुलर कैम्बियम जो अछि इंटर फैसिकुलर कैम्बियम इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम ये केम से मन काम करछनी वन बाय वन हम लेटरली देखि देखि जाओ Okay, so it is the meristematic layer. Vascular cambium macula. It is the meristematic layer responsible for cutting of vascular tissues, that is the xylem and the phloem. ठीक है जी ये ଗୋଟେ मेरिस्टेमेटिक लेयर व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक लेयर ना मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हैला सी एक्टिविटी जहां पाखरे कंटीन्यूअसली डिवाइड करिवारे कैपेबिलिटी अछि तो सेल्स आर capable to divide continuously again and again divide कर परथिबे और आपका पाखे से कैपेबिलिटी अछि the meristematic layer responsible for cutting of vascular tissues, that is the xylem and phloem, and the young stem it is present in case of patches एमाने एमते पैच हेगी थिबे जो प्राइमरी ग्रोथ टाइम में देखिथिली और जेतले से माने आगु जिबे माने कंप्लीट रिंग फॉर्मेशन करिवे सेकेंडरी ग्रोथ सेते बळे हेला बोली हमें जानिबा as in the single layer between xylem and phloem and later it forms a complete ring तो मैं डायग्राम में तुम देखिए वो डिवाइड करि परिबो इनिशियली कोन थिला ना दिस इज योर एपिडर्मिस पार्ट सेकंड पढ़ा तुम कॉर्टेक्स रीजन थर्ड पढ़ा आसिला प्राइमरी फ्लोएम मन लगता फ्लोएम बाहर पटुक अछि एंड जाइलम भीतर पटुक अछि तापर पढ़ाइला मझे तुम दिस इज दिस ग्रीन कलर पार्ट ए जो ग्रीन कलर पार्ट तुम एट देखुछ ए ग्रीन कलर पार्ट इज कॉल्ड एज योर vascular cambium ए ग्रीन कलर पार्ट जो रहिला जाको अबे हाइलाइट कर देखिए एंड देन ये जो भास्कुलर कैम्बियम रहिला से भास्कुलर कैम्बियम आगु जाई कि पैच बनेवा स्टार्ट करबो सेट तुम देख पारिबो ए जो ग्रीन वाला पार्ट रे बाहर चंदी और ब्लैक कलर पार्ट जोटा भीतर पटे अछि से तुमर इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम आ दीटा इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम आगु जाई कि एक्सटेंड करी बनैछनी कोन कंप्लीट रिंग आ अंक भीतर पळे आसला कहा कथा एठी जस्ट अ सेकंड and এই जो पार्ट आसीगला येलो कलर पार्ट ये तमर हेगला को कैम्बियम दिस इज कॉल्ड एज इंटरफैसिकुलर कैम्बियम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बोलता कोइ जे ठीक है दिस येलो कलर पार्ट इज कॉल्ड एज द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम देन तुम देख पा जो क्लियरली लिखा है जो येलो कलर पार्ट इट इज कॉल्ड एज इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और जो भी कि ए जो भीतर पार्ट रहेगला रेड कलर पार्ट रहेगला दैट इज कॉल्ड एज योर this part is called as your intrafascicular cambium and this is your interfascicular cambium inter जी दुटा कैम्बियम रिंग भीतर प्रेजेंट है अछि इंट्रा जे सारी भीतर प्रेजेंट अछि माने बाहर पट रहिला तुमर ए वाला डायग्राम जे तुम देखियो पिला माने एपण हे गला फ्लोएम एठी हे गला जाइलेम तो ए जो कैम्बियम रिंग टेटी प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड एज योर इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम that part is called as intrafascicular cambium next ये सर तुम फिल्म जाओ तुम्हें कॉर्क बोली को जो कॉर्क कैम्बियम तुम पढ़ना ना व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम प्लेस इज आस्किंग कॉर्क कैम्बियम कौन है गला ना कॉर्क कैम्बियम गला फेलोजेन इज कॉल्ड एज योर कॉर्क कैम्बियम ए पार्ट फेलोजेन इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम फिल्म ता ऊपर लेटा रहिला
ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରୁ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଯାଉ that is called as the phylloderm। ଆଉ ଯୋଉ ସେ phylloderm ସେ phylem ଆଉ phyllogen ସବୁ आपस में मिसी ଯିବେ all together it is called as your peridome। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଣ ବନେଇବେ peridome ବନେଇବେ। ଏଇଠୁ କିଛି क्वेश्चन ବି ବନେଇକି ରଖିକି ମୁଁ ତମ ଲାଷ୍ଟ ରେ କହିବି। ଓକେ, ଏମାନେ ଯୋଉ ରେଡିଆଲ ରେଜ୍ ମାନେ ଫର୍ମେସନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ ଯୋଉ ରେ ଫର୍ମେସନ ଏଠି ହଉଛି that is called as your what that is called as a medullary ridge। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇଏ ହେଲା ତୁମ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜାଇଲେମ୍, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ମଝିରେ ପଡିଥିଲା କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ରିଙ୍ଗ। ତ ଏଇଠୁ କିଛି ଅବିକା ନା ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ରେଡିଆଲ ସ୍ପୋକ୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସାଇକେଲ ରେ, ତୁମେ ପଢିଥିବ ସେଲ ଚାପ୍ଟର, ତୁମେ ପଢିଛ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ योर ସିଲିଆ ଫ୍ଲାଜେଲା ପଢିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କି କେମିତି ସାଇଟୋସ୍କେଲିଟାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 9+2 ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରେଡିଆଲ ସ୍ପୋକ୍ସ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇପ ର ଏପଟେ କଣ ଆସିବ ମେଡୁଲାରୀ ରେ ମାନେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜାଇଲେମ୍, ଇଏ ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫ୍ଲୋଏମ୍, ଇଏ ହେଇଗଲା କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ରିଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଠି ମେଡୁଲାରୀ ରେଜ୍ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। Now, in the formation of this cambial ring, in dicot stem, cells of cambium present between the primary xylem and the primary phloem is called as your intrafascicular cambium, and cells of the medullary ridge adjoining this intrafascicular cambium become meristematic and form interfascicular cambium. Thus, a continuous ring of cambium is formed। ठीक ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ କହି ରଖୁଛି ତୁମକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ରେ କିଛିଟା ବେସିକ ଜିନିଷ ହିଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। क्वेश्चन जो आसिबो डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चन बहुत ही किसी जिंस पचारियो डेप्थ को जाएंगे पचारियो कि एई सेल माने कोन सेट माने कोन दो किसी पिक्टोरियल क्वेश्चन आसिबो। बट पिला फसंदी को जगह रे एठी ना पिला माने फसतांदी असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। असर्शन रीजन टाइप रे कोन दिटा स्टेटमेंट देथिबो, या तो दिटा स्टेटमेंट ठीक थिबो या दिटा स्टेटमेंट भूल थिबो, या तो गोटे ठीक थिबो गोटे भूल थिबो। एथिका जिंस किनु मेन पिला माने हैरान कोठी होंती जेबे गोटे स्टेटमेंट दिटा को ठीक अछि एबे हमु जणियार अछि कि स्टेटमेंट रो गोटे जो रीजन ता अछि दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन और नॉट। तो से पॉइंट को जानिया को हेले तुमको मन रखिया पड़ो कि सपोज मु कहली कि कर्व कैम्बियम रो ए जिंसटी बनिला एंड ए रो रीजन होची एया, दीटा को स्टेटमेंट ठीक दे पारे बट सेटा ही तार एग्जैक्ट रीजन जानिया पई हेले तुमको बेसिस क्लियर करो पड़िबो। अब बेसिस रेडी कौन कहला कि इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम cells of the cambium is present between primary xylem and primary phloem। से जो cambium रो cells जो cells of the cambium कोडी present अछंती in between the primary xylem and primary phloem। मन रखिबो xylem रहिला भितर पटको, phloem रहिला बाहर पटको। This is your phloem and this is your xylem and these are the cells of the cambium। ये गला cells of the cambium। Now that is called as intrafascicular cambium। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ cambium ring ରହିଲା ଏଇ cambium କୁ ତମେ କୋଉ cambium ବୋଲି କହୁଛ that is called as your intrafascicular cambium। again ଆସିଲା cells of the medullary cells, ଠିକ ଅଛି, adjoining this intrafascicular cambium become meristematic and form interfascicular cambium। ଆହାରି ପାଖରେ ଯୋଉ medullary ridge ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି adjoining ମାନେ ପାଖକୁ ଥିବା ଏମାନେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇ ଫର୍ମେସନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ କଣ ଫର୍ମେସନ କରିବ ଅବିକା ସେଲ ଡିଭାଇଡ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଗୋଟେ ସେଲଟି କାହିଁକି ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, ଏଇ ଚାପ୍ଟର ତମ ସେଲ ଡିଭିଜନ ରେ ପଢିବା ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେଲ ଚାପ୍ଟର ଆଜି ସେଲ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରେ, ତାପରେ ସେଲ ଡିଭିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ସେଲ ହ୍ୱାଇ ଅ ସେଲ ଡିଭାଇଡ ବା କହିପାରିବ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୱେନ୍ ଅ ସେଲ ଡିଭାଇଡ, କୋଉ ମୋମେଣ୍ଟ ସେଲ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି। ସେଲ ଯୋଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଏ ସେଲ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, I'm talking about a plant cell, I'm talking about eukaryotic cell। eukaryotic cell ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟି ଅଛି। now remember ये न्यूक्लियस चारिपटे कौन रहिला ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, this is called as your nuclear membrane and cell चारिपटे रहला तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भितर जेतिक जिंस रहिला this entire surface present in between the nuclear membrane is called as your nucleoplasm। और ना कौन ହେଇଗଲା nucleoplasm and a cell ଭିତରେ ଯେତିକ ଜିନିଷ ରହିଲା this entire green color surface this is called as your cytoplasm। मैं मन रखिबो कि सेल ଭିତରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓପ୍ଲାଜମ ଅଛି ଆଉ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଅଛି ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ରେସିଓ ଥାଏ।
कि एतिकी एरिया न्यूक्लियस रो एतिकी एरिया सेल रो हेले जेतेबारे से सेल भितरे न्यूक्लियस भितरे तार कंटेंट डबल हो जाई थाए न्यूक्लियस रो कंटेंट टा डबल हो जाउची न्यूक्लियस कंटेंट डबल हैला माने तो न्यूक्लियस आगो जाई साइज रे इंक्रीज करची जब न्यूक्लियस साइज आगो जाई इंक्रीज करची से कंटेंट काहे की डबल करची कोन पे डबल होची ताहले जो क्रोमोसोम्स माने थिले से क्रोमोसोम्स का नंबर तो समान अछि कंटेंट डबल होची ड्यू टू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेल साइकिल रो जो इंटरफेस पार्ट आसीबो सेठी कोन हेछि ना डीएनए टा रेप्लिकेट करि जाउछि डीएनए डबल हे जाउछि कारण डीएनए सिना डबल हेले आगु जाई कोन हबो इक्वेशनल सेल डिवीजन हबो माइटोसिस त माने स्कूल ले पढिछ सम विभाजन इक्वेशनल सेल डिवीजन तो गोटे ट्विन सेल को और डिप्लॉयड सेल को दीटा डिप्लॉयड सेल डिवाइड करिया को हेले हम क्रोमोसोम रो नंबर तो समान रखिबा क्रोमोसोम रो कंटेंट को डबल करिबा और जब क्रोमोसोम रो कंटेंट सारी डबल हे जाउची तो सेही टाइम रे न्यूक्लियस साइज भी बढ़ुची जब न्यूक्लियस साइज बढ़िबो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेंट बढ़िबो और जब न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेंट बढ़िची एबट साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़िची बट रेशियो रे कथि गड़बड़ी हेबा स्टार्ट होला और जब से न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म रेशियो टी अबिका गड़बड़ हैला सेठी फ्लक्चुएट हैला देन न्यूक्लियस आगर डिवाइड कर जिवो and this division of nucleus is called as karyokinesis and जेबे karyokinesis हे गला ये गोटिए सेल भितरे one cell having two number of nucleus then तापर आगो जाएंगे सेल भी डिवाइड कर जिवो और जब सेल डिवाइड कर जिवो that is called as cytokinesis and finally eventually are getting two types of तो when I say कि एठी जो अछि हमरो मेडुलरी सेल्स माने थिले से आगु जाएंगे आर्जन द सेंट्रल फास्कुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक ये वर्ड मेरिस्टेमेटिक रे माने हेला कोन ना सेल जब डिवाइड करिवो डिवाइड को जो दुटा सेल बनेछि अगेन से सेल जाएंगे डिवाइड करछि यूजुअली सेल नो डिवीजन पर कोन हेतै डिफरेंशिएशन हेतै और सेल डिवाइड्स एंड देन डिफरेंशिएट एंड टेक अप अ पर्टिकुलर रोल बट व्हेन अ सेल कंटीन्यूअसली डिवाइड्स माने सेल डिवाइड करला पुन से सेल जो तार डॉटर सेल वाला सी भी डिवाइड केला मैच्योर करके पुन से डॉटर सेल बनला सी भी डिवाइड केला कंटीन्यूअसली तो जो कंटीन्यूअस सेल डिवीजन जो ही पड़ची दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ठीक है ए जो हमर रहेला तार चारि पटे जो एडजॉइनिंग सेल्स माने रहिले तांकर अबिका मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करला एंड ये याडू डिवाइड करिवो ये याडू डिवाइड करिवो ये याडू डिवाइड करिवो याडू डिवाइड करिवो एंड फाइनली एमान कोन बनै देबे ना इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम मन इंटरफैसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन करिवो ठीक अछि तो इंटर माने हेगला कोन विद इन कहा भितरे ना इन बिटवीन इंटर हेगला तो इन बिटवीन ना ये हेगला तमर गोटे ये तुम्हारे हेगला इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ये भी हेगला इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और दीटा इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम जे जॉइन कर रखी छी से तुम्हारे इंटरफैसिकुलर कैम्बियम तो এই जो इंट्रा और ये इंट्रा इंट्रा माने होची विद इन द सेल इंटर होची इन बिटवीन द सेल दीटा वर्ड मन रखिबो पडला विद इन इंट्रा होची विद इन आर भितरे ऊपर रहेगला फ्लोएम तळे अछि जाइलेम आंकर भितरे प्रेजेंट अछि आर भितरे प्रेजेंट अछि से हेगला इन बिट जो विद इन और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम हेगला काहे भितरे ना विद इन द टू bundle vascular bundle भितर अछि and forms the intervascular cambium thus a continuous ring like structure cambium is formed और ए वाला स्ट्रक्चर तमे आगो पाए को हिबो कंटीन्यूअसली ଗୋଟେ ring like structure it is going to produce from here तो बेसिक्स को बुझो एठू क्वेश्चन माने नै जे केवल एनाटॉमी रो ही आसीबो if we are studying anatomy so question is going to be strictly going to be asked from anatomy no it doesn't happen एंती हबनी क्वेश्चंस एनाटॉमी सहित सेल रो बेस परिबो सेल डिवीजन बेस परिबो सबुठू मिसेई कोड क्वेश्चन पचारथिले तो असर्शन रीजन टाइप रो क्वेश्चन आंसर करिया को हेले तुम जानियो कोन जेमति गोटे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करथे रूट रो सेल्स माने करंती रूट रो को पर्सन को जणाय छी जदि मोटे रूट के ड्रॉ करिबो भी क्या ये दिस इज अ टैप रूट तापे रूट रो पॉकेट एठी आसीगला रूट पॉकेट इज प्रेजेंट ओवर हियर तो रूट रे ना डिफरेंट डिफरेंट रीजन अछि ठीक अछि तो ये तमर रूट कैप ଆଉ आर तीनटा जोन अछि ना फर्स्ट आसीगला ऊपर पार्ट का जोन ऑफ मैच्योरेशन जोन ऑफ योर मैच्योरेशन number 2 this is your zone of elongation
और छोटिया पार्ट जो रहिला ये गला जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जोन बा रीजन तमे जहां भी कहि परिबो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड ये एनसीईआरटी रे लाइन हो जो पिला माने व्हाई दिस सेल्स काहे कि एई सेल्स माने ही मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करछनी व्हाट इज द नीड ऑफ दिस थिंग तर आंसर सी देछि कि द सेल्स आर स्मॉल the cells are tiny the cells are having thin cell walls the cells are having dense protoplasm and these are the reason why they continuously divide is it clear आउथरे कहिबे कोन जिंस हितला द सेल्स आर स्मॉल एक छोट छोट सेल अछन डिवाइड आप इजी हबो सेकंड द सेल वॉल इज थिन जो सेल साइड पर जो वॉल थिला पतला वॉल ता सी अब कोन ना थिन अछि एट पई इजीली साइटोकाइनेसिस सेल पर सेल प्लेट मेथड जो फॉर्मेशन हबो इजीली डिवाइड हे परिबो एंड थर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होछि कि सेल भितरे जो प्रोटोप्लाज्म अछि the cytoplasm the nucleoplasm जो protoplasm अछि that is dense in nature ता पाखे sufficient amount of nutrient present अछि से सेल आराम से डिवाइड कर परिबो तो ए जो रीजन तमे देखि परतो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ये कंटीन्यूअसली डिवाइड कर छी तमे ऑलरेडी एटा मॉर्फोलॉजी रे रूट रे पढि सारछे ए पार्ट ता भाई परछो तो एठी तीनटा चैप्टर को मिसई क्वेश्चन बनै छी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ता से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ताको मिसैले गोटे क्वेश्चन रे फॉर्मेशन हो परिबो आगो बहुत सारा क्वेश्चन अछि करिबा आई होप तुम एग्जाम के बुझी परिचो एनी डाउट इन दिस सेगमेंट यू कैन आस्क मी ओवर हियर तो डियर पार्टिसिपेंट्स अविनाश अब्बू लेमने have you any doubt Rohit is saying no sir Avinash is saying no sir no sir all clear okay Varsha okay Sai Abhishek चल नेक्स्ट फॉर्मेशन नेक्स्ट पार्ट को जीवा एबे now what is the activity of this cambial ring okay Sigma activity of cambial ring requires like the cambial ring becomes active and cut off new cells both towards the inner and outer sides एडा कोन देखिबो सेल डिवाइड कला बेले डी टाइप ऑफ डिवीजन अछि ओडेला एंटी क्लिनल आ ओडेला पेरी क्लिनल तो सेल डिवाइड होस माने भीतर पटो के सेल बनेबो टुवर्ड्स द इनर साइड आ कि सेलटा बाहर साइड में फॉर्मेशन हबो जो सेलटा बाहर फॉर्मेशन को आउटर साइड दैट इज कॉल्ड एज पेरी क्लिनल सेल डिवीजन और जो सेल माने भीतर भीतर डिपॉजिट हे जाउछ दैट इज कॉल्ड एज एंटी क्लिनल सेल डिवीजन ठीक अछि तो the cambial ring becomes active and cut off new cells both towards the inner and outer sides the cells cut off towards pitch that is called as the mature into secondary xylem pitch पिला माने कोड थिला एड मन देखियो pitch लोकेशन कोड अछि pitch ला सेंटर रे pitch this part is called as your pitch this part is called as pitch आकुई तमे pitch बोली कहउछ तो जे pitch आड को आसुची से हेला कोन तमरा सेकेंडरी जाइलम रे मैच्योर हबो the cells cut off towards the periphery matures into secondary phloem मन रहिला तो कोन कहले अभी क्या तो यदि सेल टा में एमती ड्रा करले तो ये तमर हे गेला दिस इज द pitch तो जे pitch डायरेक्शन को ग्रो करी छी से तमर हे गेला सेकेंडरी जाइलम आ जे पेरिफेरी डायरेक्शन में ग्रो करछि दिस इज योर पेरिफेरी पेरिफेरी माने परिधि बाहर को आसिला अबिता जे पेरिफेरल डायरेक्शन में ग्रो करछि से गेला तुमार कोन एठी बाहर पडो की आसे गेला पेरिफेरी पार्ट में आसिला सेकेंडरी फ्लोएम मन रखियो जिंसटी द कैम्बियल रिंग जो कैम्बियल रिंग फॉर्मेशन है कंटीन्यूअस कैम्बियल रिंग दिस इज द कैम्बियल रिंग made up of interfascicular cambium and intrafascicular cambium so cambial ring becomes active se active he jaichi active mane continuously cell divide korchi and cut off new cell cut off korchi mane divide korchi man देखियो cut off ला mane कोन हेगला एठी cut off ला mane हेगला divide हेगला जेते मोटे एग्जाम देला पर एग्जाम रिजल्ट बाहरी तो cut off के आसे कि एटी के पिला सिलेक्ट हेले एटी पिला सिलेक्ट हे पारले नहीं ठीक अछि तुम सपोज एंड कॉलेज पई के अप्लाई करछ कि मु एई हायर सेकेंडरी स्कूल पढियो चाहूची फॉर एग्जांपल मु कहले आई वांट टू स्टडी इन रेवेन्सा हायर सेकेंडरी स्कूल और बीजेपी हायर सेकेंडरी स्कूल ता पई को रिजल्ट कट ऑफ अछि if you have secured this much percentage in your HSC 10th examination
then you are eligible to study in that particular colleges. Otherwise, you can wait for the second selection or third selection on the spot admission. This one what cut off as a cut off मैंने divide कर देगा कि 80% पिला 80 पढ़िबे तार कम percentage रहले सेठी पढ़िबे तो cut off माने cell divide होची into new cells and ए जो cut off ता होची quad होची both towards the inner cell inner line को and towards the outer side को भी divide होची तो जोटा अबिका इनर साइड को आसिला टुवर्ड्स द पिच पिच कहला माने इनर साइड को आसिला दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी जाइलेम आ जो सेल ता कट ऑफ करी पेरिफेरी को जाउ दैट इज बिकम योर सेकेंडरी फ्लूइड एट गोटे बेसिक क्वेश्चन टी बनिबो ये आगो जाई तुम देखबे एन्युलर रिंग्स अछि आ से एन्युलर रिंग्स तुम देखियो पाइबो कि हमें जे प्लांट रो एज को काउंट करू ने कि ए प्लांट को केते एज हिच बोली एन्युलर रिंग को देखि स्टडी करछे हमें सेही टाइम रे हमें जाइलेम रिंग्स को काउंट करथाउ ठीक अछि ଗୋଟେ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो हम जो एनुलर रिंग रे हम काउंट करछा को देखैबी हम एटा जाइलेम रिंग को काउंट करछे नॉट द फ्लोएम रिंग्स काहे कि जानछो फ्लोएम टी आउटर साइड रहिला आ तापर प्रेशर पड़ी कि से बे कोन हे जो बिका क्रस्ट हिजे सी अबे चुदाई जेवा से लेयरटा दबि जेबो तामो क्लियर पिक्चर क्लियर इमेज किए दबो ना जोटा टुवर्ड्स द पिच डायरेक्शन में ग्रो करछि दा ना हे गेला सेकेंडरी जाइलेम और सेकेंडरी जाइलेम तार ग्रोथ देखैबो स्प्रिंग सीजन ने गोटे अलगा ग्रोथ देखैबो ऑटम सीजन ने गोटे अलगा ग्रोथ देखैबो तो स्प्रिंग रे ऑटम रे से जो ग्रो करी करी चल जे प्लांट अबिका से ग्रोथ अनुसार हम देख पारिया कि से प्लांट केते मैच्योर अछि और एज केते अछि बोली तो एट मन रखियो दिस इज द रीजन व्हाई द सेकेंडरी जाइलेम इज कंसीडर्ड एज द into the study of your age of calculation of age of the plant. Now this cambium is more active on the inner side and then on the outer side and as a result more secondary xylem is produced than the secondary phloem. बुझ पाइला ना बुझ पाइला नहीं तो ये जो xylem टी अच्छी ये भीतर पट्ट को बहुत active अच्छी continuously cell divide करची in comparison to the peripheral side the outer side और सेति पाई कि हमर secondary xylem जो अच्छी तार number बढ़ी थिबो as compared to the secondary phloem and the stone forms a compact mass of tissue so the group of cells मिसी गले तो से compact हे जिवे cells ଗୋଟେ mass function करिवे जेम तुमर एठी सेल एथला के डीएनए माने आगु जाई कि से पैकेजिंग हे कि बनै देबे हिस्टोन ऑक्टामर गुडे कि न्यूक्लियोसोम बनेबे से न्यूक्लियोसोम माने आहुरी कंपैक्ट एक क्रोमैटिन फाइबर्स बनेबो क्रोमैटिन फाइबर्स माने आहुरी कंपैक्ट एक क्रोमैटिड्स बनेबे और क्रोमैटिड्स माने आरएनए की क्रोमोसोम फॉर्मेशन करिवे दैट इज कॉल्ड एज इट कोन होची कंपैक्टनेस फॉर्मेशन होजी हेमान सो आपस से पैकिंग हो जने टाइटली से माने बाइंड होची इट से जन से हेची कि द फ्लोएम सोन फॉर्म्स द सेकेंड फ्लोएम कंपैक्ट मास स्ट्रक्चर de फॉर्मेशन करिवा स्टार्ट करिवे These primary and secondary phloems get gradually crushed due to the continued formation and accumulation of secondary xylem. However, primary xylem remains intact in or around the center. এই পয়েন্ট আমি তোমাকে কইতেলি কি মন রাখি দ ইয়ে হচ্ছে আগକୁ আসুଥିବା রিজন जो assertion না এটা ଗୋଟେ রিজন ଟେ देन से कहले जो प्राइमरी आउ जो सेकेंडरी जाइलेम सेकेंडरी फ्लोएम सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो होचंदी ओटे भलो वर्ड टे मन रखियो दे ग्रेजुअली क्रश्ड ग्रेजुअली रो माने हेगला पिला माने स्लोली ग्रेजुअली मींस स्लोली धीरे 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 से माने कोन क्रश्ड इज क्रश्ड माने भांगी जवे काहे की ड्यू टू द कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलेम जेतु भीतर पटे कंटीन्यूअसली सेकेंडरी जाइलेम फॉर्मेशन होची आ खाली फॉर्म हो ना दिस माने एक्युमुलेट भी होचंदी एकाठी होचंदी गैदर होचंदी तो अंक कंपैरिजन ने से मान कोड ना कोड में क्रॉस क्लियर बुझे ना बुझे जेंते हमर क्रिकेटिंग फील्ड रे हमर सबले नुवा नुवा आइडल फॉर्मेशन होती नुवा नुवा फेवरेट्स प्लेयर थाती सपोज रोहित शर्मा टाइम में रोहित शर्मा बहुत सेंचुरी मारला तो लोगों रोहित शर्मा फेवरेट हे गला देन विराट फेवरेट हे गला देन अबे सूर्यवंशी फेवरेट ठीक अछि तो अबे सूर्यवंशी हे गला कि एमान जो रहिले पिला माने वैभव सूर्यवंशी सॉरी तो ए प्लेयर माने बे नुवा नुवा अबे फेवरेट हे जाउछन तुम जेंते ग्रुप माने को तुम मार्क कर परिबो ठीक अछि तो जेहेतु सेकेंडरी जाइलेम रा फॉर्मेशन अधिक हेची सेकेंडरी जाइलेम रा एक्युमुलेशन अधिक होची तो आर कंपैरिजन रे पिच डायरेक्शन कंपैरिजन जो देखिबो सेकेंडरी फ्लोएम और जो प्राइमरी फ्लोएम मान से माने कोड ना कोड क्रॉस हेची देन however the primary xylem remains intact rahibo in or around the center. At some places, the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem
and the secondary phloem, and in the radial direction these are called as secondary medullary ridge. So first the medullary ridge पढ़िथिलो जो ठो फॉर्मेशन हेतिला इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एबे सी हेगला प्राइमरी मेडुलरी ridge तापर आसला कहा कदा सेकेंडरी मेडुलरी ridge आ एटा कहा भीतर फॉर्मेशन हेची द सेकेंडरी मेडुलरी ridge फॉर्मेशन हेची इन बिटवीन द सेकेंडरी जाइलेम and secondary phloem. Secondary xylem and secondary phloem भितरे और radial direction formation ହେଇଛି कि तुम्हारे medullary ridge ताको तुम कहउछ secondary medullary ridge ए जिंस जो formation हैला secondary medullary ridge ताको कहइथिबो then तापर स्लाइड कहा कथा ना vascular cambium रे about the spring wood and the autumn wood चल ए जाई किछ डाउट अछि any doubt till this any doubt dear participants because soon we are going to discuss about the question answer part. Okay, Abhishek. Okay. ଏବେ ଆସିଲା କଥା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଟମ ବୋର୍ଡ ବୁଝ ଏ ପାର୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ଅଟମ ବୋର୍ଡ କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତମେ କରିପାରୁଛ let me change the color of your yellow line the many physiological and environmental factors control the activity of cambium ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ जो होची that is due to activity of the cambium vascular cambium ର activity को नेकी सेकेंडरी ग्रोथ କଥା ଆମେ डिस्कस करथिले अर्लियर स्लाइड्स माने करे एबे क्वेश्चन आसीला कि ये एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम को फैक्टर रेगुलेट करूची कि को भी चैप्टर तुम पढुचो whether it is photosynthesis whether it is enzyme whether it is biomolecules whether it is your respiration सबुठ देखिबो there are some factors that is there some internal factor or external factor or some biotic factors or abiotic factors there is always some factors which controls or which regulates the activity of that certain particular process the activity ऊपर किछ ना किछ अभिया कोन हो जाउची ना तांकर कंट्रोल करिया पई रेगुलेट करिया पई किछ मेकानिज्म होची तो सेम क्वेश्चन आसला कि ये जो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम ये जो कैम्बियम माने ग्रो करछंदी आ माने कैम्बियम माने डिवाइड करछि कट अप करछि सेल फॉर्मेशन करछि आर एक्टिविटी को के कंट्रोल करछि ना किछि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड किछि एनवायरमेंटल प्रोसेस एनवायरमेंटल कहले माने गोडा एक्सटर्नल हे गला एनवायरमेंटल का कथा कहछ एक्सटर्नल बाहर पड़छि एनवायरमेंटल फैक्टर्स माने एक्सटर्नल हे गला जने क्लाइमेट वेदर से जिंस हे गला अधिक वर्षा हैला कि जोरे खरा हैला कि पानी अभाव हैला कि पत्र झड़ा देला गछ ये एनवायरमेंटल बट फिजियोलॉजी कहले त वाटर कंडक्शन ता भीतर कोन अबिका जो प्लांट रो मेकानिज्म ने कोन चेंज हेची जेम हमें फोटोसिंथेसिस C3 C4 प्लांट कथा आगो एक्सप्लेन करिया बुझियो जिंसटी केमी तांकर स्विच करची कंडीशन डे टू सेटी स्विच करछंती से सो पार्ट आसीबो अबिका so many physiological and environmental factor control the activity of cambium in case of spring season में कौन हो जेठी cambium is very active मन रखिबो spring time रे cambium बहुत ही active थाए and it produces many xylary elements जो हम xylem जाऊ कोन xylary elements ताको इम्पोर्टेंट सेकेंडरी xylem फॉर्मेशन करिवो having vessels and with wider cavities कोन अछि xylem हैला बा phloem हैला दे xylem ho or phloem ho they all are your what they all are your vascular bundles ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର permanent tissue ଠିକ ଅଛି they all are permanent in the meristematic tissue ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ meristematic tissue कोन continuously grow करिवो हेले जो xylem phloem माने सेल ग्रो कला ପରେ सेल बेटी कोन हे कोन सब सेल्स माने continuously grow कर साइला ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ permanent part को differentiate हे जाइछन तो in the spring season the cambium very active thibo produce kora many xylary elements having vessels with wider cavity formation karibo and this wood is called as the spring wood bolta kahibo and it is also called as the early wood spring wood ta early wood boli kaha jay and our color kemte achi how to differentiate na it is lighter in color and has a lower density like for the spring wood कोड अछि the center रे अछि spring wood को जगह अछि
ए सेंटर पहला पार्टटा और कलर केमती अछि ना लाइट कलर अछि और डेंसिटी केते अछि ना लोयर अछि डेंसिटी माने गाढ़ा गाढ़ा पणटार कम अछि Now, the spring wood which पहले what is spring wood? ना during the spring season जो wood टी formation हेते है ताको हम spring wood बा early wood बोली कहूचे. It is called as spring wood or early wood. और आरो मन रखे जिनस लाको ना it is lighter in color and has lower density. LL मन रखे the spring wood रे lighter color lower density. तापर आसीगा कथा बिका autumn wood कथा आसीबो. In winter, autumn part is ना winter the cambium is less active. तो स्प्रिंग टाइम रे कैम्बियम टी हाईली एक्टिव थिला एंड तुम्हारा विंटर टाइम रे इन केस ऑफ विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव and forms fewer xylem elements having narrow vessels it is wider vessel it is narrow vessels and this wood is called as autumn wood or you can call it as late wood and it is darker in color a color केमता darker थिबो and our density कोन अछि higher density अछि. These two kinds of woods that appear as alternate concentric rings constitute an annual ring and this is used to estimate the age of a tree. ଗୋଟେ ଗଛର ଏଜ୍ କୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ କରୁଛେ ସେ ଆନୁଆଲ ରିଙ୍ଗ ର ଆଉ ସେ ଆନୁଆଲ ରିଙ୍ଗ ବନିଛି କେମିତି ନାଇଁ ଦି ପ୍ରକାର ଉଡ୍ ର କନେକ୍ସନ କୁ ନେଇ ବନିଛି that is called as your annual ring and आपको dendrochronology माने यूज करते हैं and that is called as dendrochronology. Logy ର ମାନେ ହେଇଗଲା କଣ ଏଠି logy ର ମାନେ ହେଇଗଲା to study logos to study ଯେମିତି biology microbiology biotechnology ଠିକ ଅଛି molecular biology ତ ଯୋଉଠି logy word ଆସିଯିବ embryology physiology morphology logy means to study and dendrochronology ହେଇଗଲା କି to study the age of a plant प्लांट ର एज केते है फसिल केस रे हम यूज करथाउ कार्बन डेटिंग में कहा जाय बहुत जगह रे एठी हम गछर एज को जानतो गछ केते वर्ष हैला हम कहू ना एई वर्ष झड़ा तूफान रे 200 वर्ष पुराना बड़ गछर डेथ हैला तो हाउ एग्जैक्टली दे नो के गछ 200 वर्ष हेछि रासी पाखा पाखी सिटी वर्ष हेछि बोल केमे जानंती कारण को भी मनुष्य 200 वर्ष बंची तो देखि नहीं गछ हेला बोली तार जो डेट ऑफ बर्थ की मेंशन हेनी कि 200 आज जो डेट रे 2001 रे जन्म ହେଇଛି ଆଉ 2201 ରେ ତାର ଡେଥ ହେଲା ତ ସେମିତି କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ବୋଲି କେବେ ଜାଣିଲେ this is used to estimate the age of the tree ତାର structure of ନା ହେଲା dendrochronology ଆର ୟୁଜ କରି ଆମେ ପାର୍ଟ ଜାଣିଛେ ତ ଏଇଠି ଏବେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଆମେ କରିପାରିବା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ your spring wood and autumn wood ये तुम 2 मार्क क्वेश्चन आसपारे तुम कॉलेज एग्जाम रे स्प्रिंग वुड आउ ऑटम वुड आउ गोटे आगु आसी जाएंगे हार्डवुड एंड सैपवुड तो ये दी प्रकार वुड रो क्वेश्चन हे परियो स्प्रिंग वुड ऑटम वुड कौन क्वेश्चन हे परियो ना स्प्रिंग वुड फॉर्मेशन इज इन स्प्रिंग सीजन ये फॉर्मेशन इज को सीजन है स्प्रिंग सीजन ने और ये फॉर्मेशन इज कोठे अभी क्या ऑटम सीजन ने बा विंटर माने करे ऑटम बा तुम विंटर सीजन कहबो स्प्रिंग रे कोन हिची ना here cambium is more active cambium is more active and you know the beauty of difference between if here the cambium is more active then ultimately separate gale se kon hejibo less active hejibo cambium is less active in case of winters the cambiums here are less active in nature then যেহেতু মানে এটি মোর অ্যাক্টিভ অছন্তি তো এমান যাইকি ফর্মেশন করলে হাইয়ার বা মোর নম্বর অফ জাইলার এলিমেন্টস যেহেতু হাইলি অ্যাক্টিভ ଅଛି তো মোর জাইলারি এলিমেন্টস ফর্মেশন হব মোর জাইলারি এলিমেন্ট লেখুছটি পিলা মানে ଆଉ নোট ডাউন করদে মনে রাখি দিও মোর জাইলার এলিমেন্টস সেপোর্ট আসলে সেটা বিকা লেস জাইলার এলিমেন্টস বা ফিউয়ার देन तापर पॉइंट कोन हेजिवो ना एठी कोन हैला ना हमर स्प्रिंग वुड रे फॉर्मेशन हबो स्प्रिंग वुड तम कोन फॉर्मेशन होची ना तमरो एठी वाइडर वेसल्स बनिबो
vessels केमते अछि wider vessels जेबे कि एठी vessels केमते आइजबो narrow vessels से vessels कोन आसिला एठी जाइलेम से देखिछ tracheids xylem fibers xylem parenchyma vessels से जिनस आसिला एठी wider अछि सेठी narrow wider माने चौड़ा अछि narrow माने पतला अछि देन तापरे spring wood हे गला lighter spring wood is lighter whereas your autumn wood is darker ये लाइटर अच्छी ये डार्कर अच्छी सेकेंड जिनस आसीगला कि सेटे डेंसिटी कम आकर लो डेंसिटी एठी आसीगला कोन अबी का हाई डेंसिटी हायर डेंसिटी क्लियर ताको सॉफ्ट वुड बोली भी कहै जाय काकू ताको फर्स्ट वुड को जाय आकू लेट वुड कहै जाय दीज आर द बेसिक 3 6 जे 6 7 डिफरेंस आसीबो बिटवीन द स्प्रिंग वुड एंड द ऑटम वुड आ लिखियो तने लिखि दे परिबो पानी बगले जान India asali itu, asal asali. नहीं साढ़े 9 आसीगला Sanadar. Okay, tapi apa tu? देन आई होप तुम लिखि देइछबो डन ओके तब असले का कथा कि टाइप्स ऑफ वुड एकदम देखि दियो से स्प्रिंग वुड ऑटम वुड आउट टिके डिटेल्स से जान दो तो द कहला कौन दी टाइप्स ऑफ वुड कौन कहला इट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए वुड डिपेंड्स अपॉन द कंपोनेंट्स required for its identification and some of the characteristics features are given below तो हमें को भी वुड को केमे जानि पड़छ ना तापय किछि कंपोनेंट्स अछि सेही से कंपोनेंट जता पाखे प्रेजेंट अछि ताल से ए वुड को जीवो जे नाही त से वुड को जीवो तो कौन से कंपोनेंट्स अच्छी वाला नंबर 1 पहले स्प्रिंग वुड है द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलरी पहले द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम heavily depends upon the environmental conditions during favorable season जो condition ने favorable season ने sufficient amount रो पानी available अच्छी sufficient amount रो जिंस available अच्छी then the spring the cambium produces more wood as the cambium divides rapidly because of ideal atmospheric temperature तो बाहर टेम्परेचर ऊपर बहुत डिपेंड करे टेम्परेचर जदी भलो अछि और जदी सफिशिएंट अमाउंट रो वाटर अछि तो सही जगह से मन कोन करि परियो भल से डिवाइड करिके और ग्रो करिवे the wood is light in color and the wood is having wide xylem vessel wider xylem vessel का elements तुम कहि परिबो and it is formed in the early month of the year so it is called as the early wood आको early wood बोली भी कहै छै जो जिन हम सेठी पढ़ते ताको खाली हम डिस्क्राइब कर देठी कहै छै तो कोन मन रखिले spring wood is also called as early wood काहे early months माने मन थांती एठी मन रखियो xylem vessels माने कोन अछनी wider अछनी एठी कासिना कलर केमते अछि लाइट अछि डेंसिटी आंकर बहुत कम थांती और ये बन थांती फेवरेबल कंडीशन माने गला स्प्रिंग सीजन ने जो जगह जगह कोन हो ना बहुत अमाउंट रो पानी अवेलेबल वर्षा ऋतु पर ही स्टार्ट है ना स्प्रिंग
ठीक अछि तो सेठी अधिक अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल अछि और तथर टेम्परेचर भी सेठी अधिक नॉर्मल अछि मतलब अति खरा नाही कि अति शीत नाही से टेम्परेचर से माने काम करछथि ऑटम मोटे कोन हैला इट इज कंसीडर्ड अनफेवरेबल कारणा विंटर सीजन में for the autumn is considered unfall season for the cambium so is less active so the cambium highly active thila it cambium less active अछि and produces also less amount of secondary xylem বা secondary wood formation karibo this wood is dark in color r color केमते हैला darker in color हे गेला as compared to the early wood and smaller xylary elements सेटा थिला कोन एटी white थिला एटी हे गेला narrow বা smaller xylary elements and produce that have thick walls it is a thin wall it is thick wall and is formed in the latter month যদি পরে হউচি তাকে আমি কোন কই পারবে late wood বলি কই পারবে the spring wood is called as early wood while the autumn is called as the late wood বলি দেখো তুমি কই পারছো autumn wood definition গুলো পড়ি দাও টিকে formed during the unfavorable environmental condition that is the autumn season and the xylem vessels with narrow lumen and it forms smaller part of in the annular ring. Annual ring is smaller part of take part करता है. तापर ଆସିଲା hardwood and sapwood ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଅଛି hardwood and sapwood ସରିଗଲା ପରେ then ଆମେ ଯିବା ହାରି କୋଉଠି କି question answer round को पळेଇ ଆସିବା बाप रे एठी जाय question answer round ଅଛି Okay. The hardwood is hard, dead, dark brown colored, highly lignified and non-functional central part of the secondary xylem of the old trees. The dark color is due to the deposition of organic compound like the tannin, the resins, the oils, the gums, the aromatic substances and the essential oils. Elementary कोई कहा कहता hardwood और sapwood. जब साइड spring या autumn थिला, इनला hard and sapwood थिला. आमरे ठे बुझिबो hardwood कोन हेगला it is hard in nature. It is the dead cells and it is dark brown color. जो दालचीनी तुम मैंने खाओ जो cinnamon दालचीनी थोड़ा hardwood रे example जो सेठी कोन चल दिखा है ना तुम dark brown color से देखिया पाई कि ता पे कोन से highly lignified lignin बहुत सारा আছে बहुत dense আছে part टी and non functional central part of the secondary xylem of the old tree. तो पुराना गछरा old tree रा secondary xylem रा central part रे माने आसे non functional ना किसी function किसी basically नथे. The dark color is due to the deposition of organic compound. As organic compound का secondary metabolites भी होते. Secondary metabolite के केस में tannins आसीबो, resins आसीबो, oils आसीबो, gums आसीबो, aromatic substances, essential oils इस जिनसा हमारे present अच्छी. Aromatic मतलब जहाँ पे ଗୋଟେ aroma अच्छी, ଗୋଟେ ବାସ୍ନା अच्छी. हमारे gums formation करते जो ଅଠା बने, लाख बने, ठीक है resins बनाउचंदी हमर की secondary oil formation करचंदी and some essential oils. Essential oils are very costly. On the K party. These substances make it hard, durable, and resistant to the attacks of microorganisms and insects. So, a plant को protection provide करते from whom? From the microorganisms and the attack of the insects. Insects को attack में बनने जो होती है. और functional and mechanical support provide करीबे stem को. ठीक है, this is called as the hardwood. This part is called as the hardwood from here to here. This is called as a hardwood. Right? ମାନେ ଡାର୍କ କଲର ଥାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛେ ମାନେ ହାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଡେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ କଲର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ କଲର ହାଇଲି ଲିଗ୍ନିଫାଇଡ ମାନେ ଆକୁ ଲିଗ୍ନିନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ ଫଙ୍କସନ ବେସିକାଲି ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ଥାନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଟରେ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସେଣ୍ଟର ହେଇଗଲା କିଏ ପିଥ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ପିଥ୍ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତମେ କାହାକୁ ତୁମର ହାର୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ Then sapwood ଆସିଗଲା କଣ the peripheral region of secondary xylem it is living in lighter in color ये ଆସିଗଲା କଣ ତମ କାହା କଥା ହେଇଥିଲା sapwood କଥା ଆସିଲା sapwood is a peripheral region of the secondary xylem the peripheral region of ଥାନ୍ତି ଏମାନେ living ଥାନ୍ତି and lighter in color ଥାନ୍ତି function ହଉଛି involved in the conduction of water and mineral from the root to leaf so ଏଇ ଯୋଉ root ରୁ leaf କୁ ପାଣି ଯାଉଛି ସେ water conduction କରିବାରେ ଏଇ ମାନେ ସବୁ help କରୁଛନ୍ତି ये है तुम्हारा सेकेंडरी वुड दिस पार्ट और जे ताका पाके सैप अच्छे सैप माने गोटे
कौन हेगला सेल सैप लिक्विड कथा कहला एठी ताको सेतै कोन कहउची ना सैपवुड बोली भी तुम माने कहि परछ। As the stem continues to increase in girth due to the activity of vascular cambium, the outer cortical of epidermis layer gets broken and it is to be replaced to provide new protective cell layers. Hence, another meristematic tissue called as core cambium or the phyllogene develops usually in the cortex. Priyasa was asking this question earlier. Priyasa, are you still there? Yes. तो प्रिया सर जो क्वेश्चन तुम्हें पचारथिला मामा एक आंसर डेट देखो द as the stem continues to increase in girth जब stem ର girth ଏବେ increase କରୁଛି continuously due to activity of the vascular cambium the vascular cambium activity ସେଟା ସବୁ କଣ ଅଛି activity of the vascular cambium the outer cortical and epidermis layers gets broken बाहर पटे के थिला सबुटु बाहर पटे के थिला एपिडर्मिस स्टार्टिंग के थिला आउटर साइड जो देखे से एपिडर्मिस नंबर 1 तापर थिला आउटर कॉर्टेक्स जो पार्ट थिला एपिडर्मिस तापर हाइपोडर्मिस तापर जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट थिला से माने कोन हे गेले ब्रोकन हे गेले भांगी गेले एंड इट इज टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स आपको रिप्लेस करा हिची काहा को नहीं तुम्हारे ये जो एपिडर्मल सेल और ये जो कॉर्टेक्स ब्रोकन कॉर्टेक्स को रिप्लेस करा हिची बाय अ न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स hence another meristematic tissue called as the core cambium or out na hegala phylogene it formation is develops usually in the cortex region ne out noa सेटा कोड थिला सेही जो हमरा vascular cambium का भीतर थिला in between the xylem and phloem भीतर थिला तो माने बाहर पटे phloem भीतर पटे xylem ता भीतर थिला तो ये हेगला तुम्हारे को जगह ना ये देखो तुम्हारा हार्ट रूट कोड थे सेंटर रे पूरे एग्जैक्टली सेंटर एई पार्ट ता मु पीथ बोली कहि परिबी एई पार्ट को सेंटर के पीथ बोली भी कुआ जीवो आ एइठु एति कहि गेला हार्ट रूट एइठु एति कहि गेला हार्ट रूट एवं डार्कर कलर थांती ता साइड आसला तुमरा ना तुम सैपवुड पळे आस लाइट वाला उड हे गेला ये तुमर हे गेला सैपवुड आंक परे जो पार्ट आसीबो सैपवुड परे जो पार्ट रसब आसला लाइक योर सबुड लास्ट आसी गेला कर्क ये तुमर बे कहार रिप्लेसमेंट ठीक अछि रिप्लेसमेंट ऑफ द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर रिप्लेसमेंट आसीला then the cork cambium jahabu tame ko jo cork cambium is also called as what cork cambium is also called as phylogene it is also called as phylogene au ei jo phylogene achi आर भीतर कौन फॉर्मेशन हबो ना आर भीतर फॉर्मेशन हबो कहार आउटर साइड से फॉर्मेशन कर देबो कहार ना कॉर्टेक्स लेयर तार ना कहे गेला फेलोडर्म मन रखियो डर्म रो माने हे गेला कोन ना डर्म रो माने हे गेला लेयर स्किन जा तुम कहू आउटर स्किन तो कहि परियो तो फेलोडर्म प्लस फेलोजेन प्लस फेलेम कॉर्क इज कॉल्ड एज फेलेम तो ये समस्त आपस में मिसी गले कौन फॉर्मेशन कर देबे पेरिडर्म रा फॉर्मेशन हम ये क्वेश्चन मन देखो पेरिडर्म इज इक्वल टू व्हाट ना पेरिडर्म इज इक्वल टू तीनटा जिंस गोटे गला फेलेम नंबर 1 नंबर 2 इज फेलोडर्म एंड नंबर 3 इज फेलोजेन ये तीनटा को आपस में मिसी गले कौन हे गेला ना पेरिडर्म फॉर्मेशन हम The phylogeny is a couple of layers thick. It is made up of narrow, thin-walled and nearly rectangular cells. Phylogeny consists of cells on both sides. The outer cell differentiates into cork, phylum, and inner cell differentiates into secondary cortex called as phyloderm. And cells of secondary cortex are called as parenchymatous. This way, the cork है गला phylum, और secondary cortex है गला phyloderm, और ये phyloderm और plus phylum ता सहित जो phylogeny जो ठमन सो बाहर चंदी तो सबु मिसी कौन बनेबे पेरिडर्म फॉर्मेशन करिबे once again saying मन रखिबो ना ए जो फेलोजेन हे गला सॉरी पिला माने ए जो फेलोजेन हे गला आर भीतर कोन बाहर जनी ना कॉर्क फॉर्मेशन हेची कॉर्क तमे कोन कहउछ पटे फेलेम बोली कहउछ तो ये फेलोजेन प्लस दिस फेलेम आउ ता सहित आसीगला फेलोडर्म ये सब मिसी की फाइनली बनौछन पेरिडर्म आउटर लेयर बनौछन
ঠিক আছে এই ফেলোজেনটা কট অফ করছে মানে ডিভাইড করছে কট অফ মানে বুঝিছিল আগে কট অফ করিয়া মিন্স ডিভাইড করিবা the cells on both the sides and the outer cell differentiate into cork phylum and the inner cell differentiate into secondary cortex called as phylloderm and cells of secondary cortex are basically parenchymatous in nature ଆଉ ଏ ଯୋଉ parenchymatous nature ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି living cells ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଫେଲୋଜେନ ଏ phylum plus phylloderm ଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଇ କଣ ଫର୍ମେସନ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିଜ ଫର୍ମେସନ କରୁଛନ୍ତି Sir, why does vascular cambium's wavy ring straighten in Dicot secondary growth and how many phloem layers form before xylem crosses them? Okay, how many phloem layers form before xylem crosses them? तो ओके तो जाइलेम जो बनिଛି ସେ ଭିତର ପଟକୁ ବନିଛି ନା ୱେଭି କାହିଁକି ବନୁଛି ନା ରିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଫର୍ମେସନ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ୱେଭି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ଏଠି ରିଙ୍ଗ ଫର୍ମେସନ କରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଠି କଣ ଏବେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ତା ସହିତ ଆସିଲା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେମିତି କି ତାଙ୍କର ମେଟାବୋଲିଜିମ କେମିତି ଅଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ୱାଟର ଆବଜର୍ବାନ୍ସ କେତେ ହେଇପାରୁଛି ସେଲ ପାଖରେ କିଛି ପାଥୋଜେନ ଆଟାକ ହେଇଛି ନା ହେଇନି କୌଣସି ବାହାର କିଛି ଇନସେକ୍ଟ ସବୁ ଆଟାକ କରୁଛି ନା କରିନି ସେଲ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଫାଇନ ଅଛି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଫେଭରେବଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର କେମିତି ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୋଥଟା ଅବିକା ୱେଭି ନେଚରରେ ହେଇଥାଏ ଭାସ୍କୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମର ୱେଭି ଷ୍ଟ୍ରେଟେନ୍ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେଲ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି କଟ ଅଫ୍ କରୁଛି କିଛି ଆଣ୍ଟିକ୍ଲିନାଲ କରୁଛି ଭିତର ପଟକୁ କିଛି ପେରିକ୍ଲିନାଲ କରୁଛି ବାହାର ପଟକୁ ତ ଡିଭିଜନଟି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସମାନ ହବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆସିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏବେ ସେଲ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି ନା ସେଲ ର ଅବିକା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲୁଲାର ପ୍ଲାଜମା କନେକ୍ସନ ବି ରହୁଛନ୍ତି तो प्लाज्मा कनेक्शन जो ଅଛି ସେମାନେ ସେଲ କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ତ ସେଲ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ନ ମରିଆ ଯାଇକି ଅଟୋଲିସିସ୍ ନ ହବା ଯାଇକି ସେ କାମଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ତମେ ପଚାରିଛ ଆର ଫର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଥିଲା ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବିଗିନିଂ କୁ ଯଦି ଯିବି ଦେଖ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो डेवलपमेंट होची से डेवलपमेंट रा कोन देला पॉइंट आडे बुझा फर्स्ट लाइक कैम्बियल सेल डिवीजन हबो देन सेल एक्सपेंशन और सेल एलोंगेशन करिवो सेल वॉल तापर थिकनिंग हबो कारण सेल बनि गेला तापर वॉल थिकनिंग होची देन सेल तबे मॉडिफाई करूची दैट सेल वॉल स्कल्पचरिंग हबो एटी सेल एटी मॉडिफाई स्कल्पचर बुझ परछो से हबो साइज रिसाइज पुन आउथरे साइज पुन आउथरे रिसाइज ए कंटीन्यूअस करिवो डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन डिडिफरेंशिएशन मान थरे बनि गला ठीक है मॉडिफाई हला ठीक है पुन हम चेंज करले आउ थरे बनेले पुन मॉडिफाई करले तो ये कंटीन्यूअसली प्रोसेस टी चलीबो देन तापर लिग्निफिकेशन हबो जो जगह रे गैप हो जे गैप रखे लिग्निन सुबेरिन ए सब वैक्सी मटेरियल रखा हबो एंड तापर फाइनली सेल टा अबिका डेथ हे जिवो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोलिसिस ऑटो माने होची सेल्फ और लिसिस माने होची ब्रेक डाउन बाय डेथ सेल निजे निजे गोटी मार दे खाइ दे तो ये था तुम्हारा स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में जो डेवलपमेंट हो जे तापर सेकेंडरी ग्रोथ हमर स्टार्ट हेतिले So what is peridome? The phylogen, your phylum and phylloderm are considered called as peridome. A cork is impervious to water due to suberin deposition in the cell wall. Cell wall पे क्या अच्छी suberin deposition अच्छी. Okay, got it. तापर peridome part आसिला. चल. Cork cambium रे bark अच्छी. Bark is a non-technical term that refers to all tissues, peridome and secondary phloem extruded to the vascular cambium. It is of two types. Early है soft bark. It is formed early in the season. Late है hard bark, but it is the formed towards the end of the season. Then lenticels आसिला important part है lenticels है कौन तो मानो ना phloem जब cut off होची closely और से lenticel formation करिवो और से lenticel टा plant को breathing and exchange of gas रे help करिवो plant भी respiration करता है not only stomata helps in respiration जो stomata present ଅଛି से ही खाली respiration में help करिवो नहीं ता सहित woody stem मान पाखरे भी कौन lenticels माने थांती Now these cells rupture epidermis forming a lens-shaped openings. What a lens-shaped opening that is called as your what? That is the lenticels, and they occur in mostly woody trees and function when lenticels permit gas exchange of between the outer atmosphere and the internal tissue of the stem. Then the secondary growth dicot road vascular cambium formation करछंदी
not so important. Now it's begins times for the question answer now. A was question answer now. So I hope participants mane abdika commit galani, but jo mane present acha, I'm expecting some answers from you all. So dear participants, there are some questions in your screen. ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ questions ଅଛି. So kindly let me know what is the first question answer କଣ ହବ. ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି. ଏବେ question answer କରିବ ନା ଏଇଟା ମୁଁ PDF share କରିଦେଲେ ତମେ ସେଇଠୁ କରିକି ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବ. ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଲା. ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ରେ ପଚାରିବ. ଆନ୍ସର ଆସିଗଲାଣି ମତେ ଏପଟେ. I can see the answers. Chirasmita is saying कि first question answer ହେଲା B. साई भी कहूची B, पूर्वी कहूची B. ठीक है सुनी देखियो आगे first question हमर अछि कोन exactly. The vascular cambium responsible for secondary growth is primary in origin, lateral in position? No. Secondary in origin and lateral position? Yes. Lateral position अच्छे अभी का तो first answer question answer हो गया B. Correct. Question number 1 answer होची B. Then question number 2. In a Dicot stem, the vascular cambium derived from vascular cambium code derived intrafascicular and interfascicular cambium. Do number C correct? Do number C be correct. During the secondary growth in a Dicot stem, the primary phloem gates, primary phloem कौन होची टी पिला माने primary phloem टी भांगी दियो basically crushed and pushed outward. 3 number हेगला तुम्हारा B. 3 number answer भी एठी B हबा. Yes, Chirasmita is saying correct answer. Yes, sir, be correct अच्छी 2 number C. Subhasmita Behra 2 number C. Chirasmita Das 3 number B. Yes, correct. 3 number B होची right answer. Now sir, be 4 number question. The sequence of events. मते ठीक show करू. तुम the screen ने मते देखि पाछ screen ने but मते एपड़ screen ने देखा जाउनी visible. The sequence of events and secondary growth of a dicot stem. Dicot stem मोर growth को पट हबो अभी के. Formation of vascular cambium, तापर secondary phloem, तापर secondary xylem. ठीक. 4 number C हबनी रे, 4 number D भी हबनी पिला माने. 4 number दोस्तों A रे होची. Secondary xylem, then vascular cambium, then cord cambium. नहीं, sequence of events secondary growth in a dicot stem. Stem रे आगो vascular cambium formation हबो, तापर जो secondary phloem बनेची बाहर पटको, then secondary xylem बने भीतर पटको. That is the thing. Option A, question number 4 रो Chirasmita जो कहछि question number 4 ना question number 4 आंसर होछि A. Question number 5 कौन अछि एठी अबिका the cord cambium phylogen in a dicot stem originates from dash. The phylogen कोड बनिछि अबिका dicot रो phylogen बनिछि epidermis नाही pericycle नाही cortex. Yes, question number 5 हैला B. question number 5 रो आंसर हैला तमरा B. एटा मु आवा मिनिमाइज करि दे. Okay. Question number 5 हैला B. Now come to question number 6. Question number 6 है which of the following is not a part of the periderm? Periderm रो part किए नुहे phylogem अछि phylem अछि phylloderm अछि किए नुहे option D अगला pericycle. Yes, Chirasmita भी correct answer अछि, साई अभिषेक का भी correct answer अछि. Very good. तापर जा question number 7 को. Question number 7 the मोर annotate कर कर जाउजी त माने कहि कहि जिबे आंसर सब कोन अछि. चल. Question number 7. Secondary growth of the dicot root, the vascular cambium
is derived from derive ହେଇଛି conjunctive parenchyma and pericycle cells ଏଇଠୁ ବନିଛି pericycle cell formation ହବ yes साई अभिषेक 7 नंबर ए आंसर ठीक अछि तापर 8 नंबर the secondary xylem is formed in roots from को to endark ना mesork ना exarch secondary xylem जदि कहबो तम कहबो एटे root case रे exarch formation हबो yes option number c is the correct exarch is the correct answer yes seriously then lenticels are involved in gas lenticels involved in ये बहुत easy question lenticels माने कोथरे involve होचंदी ना gaseous exchange रे involve होचंदी तापर now question number 10 को जदि जेबा question number 10 कोन हला just a second मैं गोटे सेकंड रहंतु just a second hold on टिके टेक्निकल प्रॉब्लम हैला पिला माने आस्ते share the post attendance हां हमर क्वेश्चन नंबर 10 नहीं सरथिला देन अब क्वेश्चन नंबर 11 तमन स्क्रीन ने अछि इन ओडी question in a OD stem the spring wood and autumn wood forms a characteristic structure called as dash तब हमें कौन कहबा स्प्रिंग रूट हिला आंसर है तुम्हारे ठीक yes question number 10 रो 11 रो आंसर हो C option C is the correct answer 12 number question hardwood differs from softwood in dash 12 number B correct answer is option C yes Chirasmita Sai Abhishek the correct answer is option C yes Priyasa correct answer is option C तापर बड़ा सा क्वेश्चन नंबर 13 को क्वेश्चन नंबर 13 रो medullary ridge vascular ridge are dash Three number B. Yes, correct answer is option B. Option B is the correct answer. Okay. Option B is the correct. Question number 14 जो देखियो पिला माने question number 14 correct answer होची which of the following is true for secondary inversion dicot but not in stems R भी होची question number 14 में जो देखिया पिला माने answer होची option B cork originates from the pericycle
14 answer में B अच्छी. Yes, I have Smita, correct answer. Then Jai Abhishek, Abhinas, sir no. Number 11 repeat करबी. Number 11 गोटे सेकंड कोड़े जाउची. Question number 11. In a woody dicot stem, the spring wood and atom wood form a cantilever structure called as dash. Question number 11 थिला तुम्हारा एया and आपको आमे कहबा annual ring बोली कहबा. The spring wood atom wood आपस में मिसे की कौन बनैछंती. Question number 11 टा annual ring बनैछंती. ठीक है hardwood तापर defer करसला. Question number 15 को आसो. Question number 15 ना right answer हिला तुम्हारा option D is the correct answer. Option D is activation of conjunctive parenchyma to become meristematic. The first step in secondary growth, the first step in secondary growth in the dicot growth is different called as your activation of conjunctive parenchyma to become meristematic. Yes, question number 16 को जदि आसीबा. Question number 16 the correct answer तुम्हारा हे गला option A. Yes, Priyasa, Sai Abhishek. Option A is the correct modular ridge. Phalogen cut off cells on both sides. The outer differentiates into outer टा आगु जाई कौन हबो. Again correct Chirasmita. 17 number answer होची B. Phylum बनोची cork बनोची. Yes, Sai Abhishek correct answer. Which one gives rise to lateral root? Lateral root बनोची की आगु जाई की. Question number 18. Option B again correct Chirasmita and Sai Abhishek. Yes. Question number 18 na answer होची option B. Correct answer अच्छी. Then तापरे question number 19 को जिबा. Secondary growth is absent in case of dash. Secondary growth कोठी देखा जाए नहीं. Correct answer is option C. Monocot stem में देखा जाए नहीं. मन रखियो dicot stem देखा जाए, dicot root देखा जाए, monocot stem में देखा जाए नहीं. Then vascular cambium जब देखिबा अभी क्या? नहीं के टाइम थी फोन से बारंबार. Okay. Vascular cambium is more active on the inner side, producing. Question number 20. The correct answer is option A. मेडिकल आंसर तुम कहि दे जाउची कोन हबो तुम खाली ताको मार्क कर दे. क्वेश्चन नंबर 20 रा आंसर होची ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 21 जो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच इला फिल्म कॉर्क कैम्बियम तापे कोन से सुबेरिन अछि. ठीक अछि करेक्ट. Question number 22 जब देखिबा 22 पाखे कोन जे secondary growth proceeds in an old dicot stem. The primary tissues that get completely lost are called as they are called as your cortex and endodermis will be the correct answer. 20 number A correct अच्छी. 20 number A 22 टा A 23 टा C. बाप रे बस हाईली स्पीड रे गलनी. हो 22 तमरे हे गला एठी cortex and endodermis. 23 तमरे जब देखिबा अभी क्या 23 हेउची तमरे in the secondary growth of the root the pericycle gives rise to your correct answer is only vascular cambium, only cork cambium, vascular cambium partly, cork cambium. ठीक अछि vascular cambium partly रहिबो, cork cambium रहिबो. Then तापर जो 24 जो term dendrochronology related to the study of a जो annual ring आसला एटा. dendrochronology annual rings को ताडी कहला. Then तापर आमे एटा को all drawing को clear करी कि annotate को clear करी आगु जिबा. Question 25 बस एती लास्ट स्लाइड एटा. Question 25 which of the following gives rise to the procambium? Procambium बनोची के ऑप्शन सी cork cambium बनेबो procambium को. Then 26 the jiba vascular bundle in the root takes place in the origin of pericycle conjunctive parenchyma. None of these both A and B. Secondary growth in dicot stem is the activity of dicot stem का activity xylem activity. dicot stem जो बनुची xylem रे formation होची. Question number D तापर हे जिबो only vascular cambium are examples of
29 ନା 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 ଏଇଟା 29 ହବନି ରେ, ଭୁଲ ହେଲା କଣ ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି। क्वेश्चन नंबर 26 ଯଦି ଦେଖିବ 26 ର ଆନ୍ସର ହବ both A and B correct। 27 ଯଦି ଦେଖିବ secondary growth chain Dicot stem is activity of xylem ନାହିଁ, xylem ରୁ କାଇଁ ବନିବ, cambium ring ରୁ ବନିବ। ତାପରେ 28 ହେଇଗଲା ତୁମର vascular cambium examples of lateral meristem, these are lateral meristem not intercalary meristem apical meristem notice ହବନି। question number 29 vascular tissue flower develops from a plerome ରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ important question। vascular tissue flower develop করছে plerome ରୁ, not peribleum not dermatogen not collagen, plerome ରୁ ବନିଥାଏ। and question number 30 which of the following is the primary level lateral meristem, primary lateral meristem ହେଇଗଲେ କାହା କଥାଟା intrafascicular meristem ବୋଲି ତମକୁ କହିପାରିବ। ঠিক আছে তোমাদের ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି, ମ୍ୟାଚ୍ କରେଇଦବ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଏଠି ମୁଁ କରିଛି ସେ ଆକର୍ଡିଂଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରେଇଦବ, that is going to be your final answers। So thank you so much for your kind attention and we'll definitely meet again। Okay, ଆମର 9ଟା ବେଳେ ସରିବା କଥା, 9:15 ହେଇଗଲା, but 5 minutes break ନେଇଯାଅ and after 5 minutes ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା next slide ରେ। hope you to see you all once again। ଆମେ ତାପରେ start କରିଦବା cell chapter start କରିବା। ଗୋଟେ 5 minute ର ଛୋଟିଆ break ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ, ଠିକ 9:20 ରେ ମୁଁ start କରିଦେବି part ଟା। Okay, 5-10 minutes ର break ନେଇକି ଆସ, then ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା start କରିଦବା।
Uh, Welcome once again, dear participants. आर पीडीएफ टा मु ट्राई करछि एसे पके शेयर कर देबा पई की देखो स्टार्ट बॉक्स जे ऐड करी होछि पीडीएफ टा मु कर दोछि गोटे मिनिट मु ट्राई करछि सेंड करिया को लेट्स सी कोन होछि इट्स बीन अपलोडिंग पीडीएफ सेंड हा तो काइंडली चेक इज इट ओपनिंग और नॉट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पीपीटी फॉर्म में प्रेजेंट अछि तो तमे डायरेक्ट चेक कर देबे चलने ओके so once again welcome back to all of you to the next class, and today it's going to be a fresh chapter that is called as the cell, the basic unit of life. So this is it opening. The slide ta kholi hochi dekhi hochi. But kindly let me know whether it is working or not. If it's working or not. Okay. Now come to the another chapter, another part, that is the cell, the basic unit of life. Start now. So you know, a cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organisms. You know it very well, dear students. What is a cell? A cell is the basic structural, cell is the basic functional, cell is the basic fundamental unit of all living organisms present in the planet Earth. So first of all, first question it arises करछि, what do you mean by living organism? I mean living काहु कहउछे? तम language रे बा तम भाषा रे what do you mean by living? तो हम living काहु कहबा ये फर्स्ट चैप्टर बिलोंग करछि living organisms को organisms माने काहाकु नै तैयारी छन्दी, that is organisms are made up of yes. So what do you mean by living? Living kada basi pathu asa topic was over here. Organisms are made up of organ systems, and these organ systems are again made up of different kind of organs. Organs are constituted of tissues. Tissues are made up of cells. That's why you called it as cell is the basic fundamental, cell is the basic structural, and cell is the basic functional unit of all living organisms present on this planet Earth. But the cell देखिबो, cell भी कम नहीं, cell भितर भी आहुर अन्य जिनस मान अछंती, just like cell organelles. Cell भितर present अछंती cell रो organelles माने, और cell organelles माने पुणी तैयारी जन कहा को नहीं कि
different kind of biomolecules को नहीं तैयारी चंदी. Cell organelles are composed of different kinds of biomolecules. If I talk about ribosome, you all know ribosome is a kind of cell organelle. ठीक है, it's a non-membrane bound cell organelle. आज चारिपटे कौन से membrane नहीं. So how this ribosome कहाँ को belong करची? Ribosome is belonging to cell organelle. And ribosome कहाँ को नहीं तैयारी ची? ना ribosome तैयारी जोड़ाई जिनसे को नहीं की. One is the ribosomal proteins, and ribosome is also made up of rRNA, ribosomal RNA. तो RNA रे किया अछि एठी न्यूक्लिक एसिड अछि. तबे कथा हला कोन ना ए जो प्रोटीन पार्ट ही गला ए जो न्यूक्लिक एसिड ही गला दे टुगेदर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स. बुझपाइला. तो कथा हला कोन एठी ना ऑर्गेनिजम्स माने किए ना व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स आर made up of various kind of organ systems आकुनिक अभिका तुम बोले respiratory system, reproductive system, circulatory system, excretory system. ठीक है, different organ system को नहीं तेरी ची. So organ system में क्या है, different kind of organs are there. Organs में common as different kind of tissues are there. Or in a tissue group of tissue or a group of cells having a common origin and doing a similar kind of function that they may or may not be similar in size or shape, but definitely the function is similar and the origin is similar. And then say cells are there in between the tissues. Cell cell organelles like Golgi body, mitochondria, lysosome, vacuole, chloroplast, plastid. These all are different kind of cell organelles. As a cell organelles को कहा गुने तैयारी चंदी. These are made up of biomolecules. कहा गुने तैयारी चंदी. Biomolecule को तैयारी चंदी. And biomolecule common asile. Now you know about protein, you know about carbohydrates, you know about lipids, you know about nucleic acid. These are the different kind of biomolecules जहाँ को नहीं की cell organelle तैयारी ची. For a nucleic acid कहा गुने तैयारी ची. न्यूक्लिक एसिड पुणी को माने अछन ना सुगार अछि. को सुगार अछि ना राइबोस सुगार, डीऑक्सी राइबोस सुगार. ता सहित पुणी नाइट्रोजनस बेसेस आर देयर. ता सहित पुणी फॉस्फेट ग्रुप भी अछि. तो टेक्निकली ते मानक भितर को माने अछन ना कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, nitrogen. Now these are the simplest molecules which are present. और से मानक हमें कहूचे biomolecules को. बेसिकली बायोमाइक्रोमोलेक्यूल ही परिबो, बायोमाइक्रोमोलेक्यूल ही परिबो. और से बायोमोलेक्यूल को नहीं की तैयारी ही ची को जिंस पिला माने ना तुम्हारा सेल रो ऑर्गेनेल्स. तुम प्लास्टिड देखो, तुम्हें लाइसोसोम देखो, तुम्हें गोल्गी apparatus देखो. समस्त तैयारी जन कहा को नहीं की बायोमोलेक्यूल को नहीं तैयारी चली. और सेही गोल्गी apparatus, सेही लाइसोसोम, सेही वैक्यूल, सेही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली बनै छथि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. और से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम then तापर तार भीतर प्रेजेंट असला तुम न्यूक्लियस अछि गला तापर तुमरा प्रोटीन फैक्टरी एंजाइम राइबोसोम अछि. ये सब सेल ऑर्गेनेल को नहीं की तैयारी छि कि तुम सेल के तैयारी. तो आज हम चैप्टर ना हैला सेल तर इंट्रोडक्शन देखिबा. द सेल इज द बेसिक फंडामेंटल. ठीक अछि, ये हमर स्ट्रक्चर शेप सब दोछि. स्ट्रक्चर प्रोवाइड करछि प्लस ए फंक्शन प्रोवाइड करछि. यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सेल. इज इट क्लियर? Do you got a basic idea about cell? Previously आठ तो बहुत सारा ऑनलाइन क्लास हमारे कंटिन्यूअसली चली छी पिला माने. तो आज ही चला एक क्लास की एनाटॉमी चैप्टर सॉरी सच्ची. तो भाई पहले बॉटनी रे पर्यंत हमें को चैप्टर कंप्लीट कर साले नहीं. Now we have completed the our living world. Then we have completed the biological classification. Then we have completed the number third है तुम्हारा plant kingdom. Then तमें पढ़े जाए morphology of flowering plant. Then चले anatomy of flowering plant. So out of 10 chapters in biology, in botany we have completed 5 chapters. And this is the 6th chapter. I will start कर ले cell. Cell सैला पर start है जो कहा था cell परे as जीव तुम्हारा cell cycle, cell division. Then the तुम्हारा last in the chapter photosynthesis, उड़ेगा respiration, और plant growth and development. So in total in biology you are having 19 chapters. और से 19 टा chapter भितरु
11 क्लास 19 टा चैप्टर रो तुमर अबिका डिवाइड हो जायछि 10 तुमर पढौछि बॉटनी रे और 9 पढेला बे जूलॉजी रे so is out of the 10 we have completed the 5 chapters already been completed the 5 chapter ভিতরে কি কি ଆସିলা number 1 was the living world number 2 ଆସିगला biological classification नंबर 3 ହେଇଗଲା प्लांट किंगडम ये तमर यूनिट 1 को बिलोंग करथिले प्लांट किंगडम तापर हम आसीगले कोठी की 4 नंबर पार्ट को पळे आसीले यूनिट 2 जोटा आसला मॉर्फोलॉजी तापर चैप्टर 5 जोटा आज हम कंप्लीट करले एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देन चैप्टर 6 एबे हम स्टार्ट कर दैट इज कॉल्ड एज द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल का मतलब पूछे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम जी स्टार्ट करछे अपकमिंग चैप्टर कौन सब अछि चैप्टर 7 8 9 10 7 में पढ़ेला सेल साइकिल और सेल साइकिल एंड डिवीजन देन चैप्टर 8 रे जो तुम कहा कथा सेल साइकिल सैला पर स्टार्ट जो तुम फोटोसिंथेसिस तापर आसीला रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और सब लास्ट को आसीला कहा कथा एठी रेस्पिरेशन पर आसीला प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट so these are the topic which we are going to complete in this 2 months आउ 2 मास भीतर हम कंप्लीट करेंगे देन सेकंड टर्म में स्टार्ट करेगा एनी डाउट सेल द इंट्रोडक्शन किसी डाउट रहला हम आगो बढ़िबा साई अभिषेक के सेइंग एसएस सफिगस सबरे पीडीएफ सेंड करी हबो कि प्रीवियसली हमको लिंक मिली नथिला ओके यू हैव टू को कॉलेज को बिलोंग करछो तुम सेठी नोडल ऑफिस सहित तुम कथा हेई परिबो बाकी मोर दा जोडा पॉसिबल हेई परिबो आई डेफिनेटली हेल्प ओके नाउ लेट्स क्विकली हमरा स्टार्ट कर परिबा ओके तेबे आसले का कथा सेल इंट्रोडक्शन जे हम देखिबा सेल कथा एटी पडिची ना सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक he is the first scientist to see a dead cell then तापर आसले का कथा ना हमर एंटन von leeuwenhoek he first observed and described a living cell तो कथा आसला कि खाली सेल तरीके डिस्कवर करते नि पछाना जीवो तो सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड द सेल जो थिला सेल दा डेड सेल थिला और द कोट आनथिला गोटे प्लांट रो ओक ट्री बेसिकली ओक ट्री गोटे प्लांट से प्लांट रो बार्क रो ताको बे एक्सट्रैक्ट करि से आनथिले ताको से देखथिले हनी कम लाइक स्ट्रक्चर समान को दिखाउ मिलथिला देन हाउ इट इज लुकिंग लाइक इट्स लुकिंग लाइक अ हनी कम लाइक स्ट्रक्चर तो तुम हेक्सागोनल शेप तुम देख पारियो प्लांट सेल्स माने ए भलिया प्रेजेंट थिले हाँ इफ पॉसिबल आई डेफिनेटली हेल्प एबे तो एट जहां प्रेजेंट अछि पाके तो पठै दिले चैप्टर टा आगो जो चैप्टर मिल देले डेफिनेटली हेल्प देन ए हनीकम लाइक स्ट्रक्चर तुम देखिया पाइबो रॉबर्ट टू डिस्कवर करले सेल को जो डेड सेल थिला डेड सेल माने हेगला कोन ना ई सेल माने पाके लिविंग साइटोप्लाज्म लिविंग प्रोटोप्लाज्म नथिला बट फर्स्ट लिविंग सेल को देखथिले कि एंटन von leeuwenhoek मन रखिबो आको ना स्पेलिंग सब मन रखिबो आको शॉर्टली ए वी leeuwenhoek बोली कहा जाय एंड द फर्स्ट ऑब्जर्व द डिस्क्राइबर लिविंग सेल लाइव सेल जो से देखथिले सेटा लाइव सेल दा कोड डिस्क डिराइव हितिला इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट सेल के क्वेश्चन कि पॉन्ड वाटर देखथिले पॉन्ड वाटर ताका by ନିଜସ୍ୱ डेवलप थिला माइक्रोस्कोप ता पॉन्ड वाटर प्रथम लिविंग सेल देखिथिले ये भी गोटे कांसेप्ट अछि नहले पॉज सेल हम जो वुंड फॉर्मेशन हुए वुंड हुए घाव हुए से वुंड का जो पॉज सेल था से पॉज सेल को प्रथम लाइव सेल से देखिथिले बोली कहबो मिले नेक्स्ट हम ये देखिए द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे रिवील द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ अ सेल
तो गोटे सेल को देखा पाई यू नो सेल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई दिस वन यू कैन नॉट सी अ सेल instead it's an ostrich cell যদি ostrich egg তুমি ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସେ ଖାଲି ଆଖି ଦେଖାଯିବ ostrich egg is the largest cell that ତମେ କହିପାରିବ but in general cells are not visible to a naked eye you cannot even see a cell through your glasses ତମେ glass ପିନ୍ଧିକି ତ ଦେଖିପାରିବ spectacles ପିନ୍ଧିକି ତ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ specs ରେ ତମେ cell କୁ ସେବେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ ଯେବେ ତମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ଦେଖୁଛ କାହିଁକି ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କି ହେଇଥାଏ ନା ସେଲ୍ ର ସାଇଜ ଯୋଉ ଅଛି ତା ସାଇଜ ଟା ବହୁତ ଟାଇନି ଥାଏ ବହୁତ ସ୍ମଲ୍ ଥାଏ and they are microscopic in nature 10 to the power minus 6 meters ସେମାନଙ୍କ range ସବୁ ଆସିବ so it is not visible to your naked eye the cell को ଆମେ ଦେଖିପାରିବା only through the invention of compound and electron microscope ଠିକ ଅଛି ଆଗରୁ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା କୋ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ସିମ୍ପଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ then simple microscope पर पुणी क्या हुआ सर simple microscope पर धीरे धीरे डेवलप ହେଇକି ଆସିଲା compound microscope ଆସିଲା compound microscope ଆହୁରି evolve ହେଇକି electron microscope ଆଣିଲା लाइट माइक्रोस्कोप आगो जाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप कला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर आती तुम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेम और आज तो माने साइंस एंड एवोल्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट डेवलप करछि एंड वी आर हैविंग अ वेरी हाई स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप आर देयर एंड जो इन्वेंशन ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ସେଲ୍ ର ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାल डिटेल्स को रिवील करि पारछे जानि पारछे कि हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड द माइक्रो लेवल रे केमती जिनसटे होते हम देखि पारछे देन तो ये हला सेल द बेसिक जिनस सेल इंट्रोडक्शन तुम जानि पाइला सेल कहा पे तैयारी छी सेल ऑर्गेनेल्स मानक ने तैयारी छी आ सेल को हम देखि जे कोछरे ना माइक्रोस्कोप पे देखि पारछे दिस इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट तुम समस्त हायर सेकेंडरी स्कूल बायोलॉजी लैबोरेटरी यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी दिस ठीक अच्छे तो बायोफिजिक्स हेल्प रे आम जिन बन पारे ये लेंस एक्टिविटी तुम देखा पाइब आर एमती एंगल केते रखाई जो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला भी यूज होको बनवाई कि तो ये सब जिन मार्क कर पार कि साइंस खाली बायोलॉजी कहले खाली बायोलॉजी ही रही किसी ना आ सहित अन्य पार्ट माने भी इंटीग्रेट होके अच्छे जमी फिजिक्स इंटीग्रेशन अच्छी ये इंजीनियरिंग इंटीग्रेशन अच्छी ये तुम मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन अच्छी ना तो सब जिन पुणी आमे से जो स्लाइड रे जो ग्लास स्लाइड नैचे ग्लास रिंग काहे कि नैचे तासे कोन सॉल्यूशन हम ऐड करछे से सॉल्यूशन रे केते विस्कस अछि बा केते डेंस अछि बा केते लाइट अछि एठी कथा आसीला कार केमिस्ट्री कथा भी आसीला तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी दे ऑल आर अमालगमेटेड तक हम साइंस को लिखो जे ये कंप्लीटली मिसिंग अछि काहा को भी इंडिविजुअली हम स्टडी कर परिबा ना देख तापर से लगा करता सेल थ्योरी तो आज जो चैप्टर रे आज जो टॉपिक डे तो फर्स्ट क्लास टा हमर टिके बिट हेक्टिक हे जाइथिला वी हैव स्टडीड अबाउट द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ सेट हेबे मार्क करथिले बट एबे जो सेकंड पार्ट टा आसीला एही पार्ट रे हमर एबे टिके इजीली रखा है इंट्रोडक्शन बेसिक्स तो इन द टुडेस क्लास what I'm going to teach you about the basic introduction of the cell, what is a cell, number 2 what is the cell theory, number 3 what is cell discovery the discovery केमती हेतिला कोन कोन हेतिला एंड एठु पीछे मैं बेसिक क्वेश्चन करया को जाउची ठीक अछि से सेल थ्योरी को नै छी तो आई होप तुमे लास्ट टाइम के रहिबो आ क्लास कंप्लीट होवा जाय कि आ ता भीतर जहा जहा क्वेश्चन आंसर अछि तुमे डाउट इज तो पछरी परिबो एंड क्वेश्चन आंसर तुमे देखि परिबो ओके तो सेल थ्योरी जो कथा आसीला कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी थ्योरी कन तो माने कोन बुझछो वर्ड आसीला थ्योरी माने कोन थ्योरी होची कि to explain a scientific experiment पे हमने explain करछि जिनसो को तो आमे कहीं भी देखिने how a cell is made because we all are made up of cells but we never seen how a cell is made from theory हिच बोली evolution केमती हिच बोली तो ताको explain करिया पाई कि आमे किछि proposal दिछि और से proposal को आमे theory बोली कहूछि तो जेहेतु फर्स्ट साइंटिस्ट हिसाब रे मैथियस स्लेडिंग एंड थियोडोर स्वान जे माने बे काम प्रपोज करथिले ताको सेल थ्योरी रो इन्वेंटर बोलिया भी कहै ठीक अछि तो ए जो मैथियस स्लेडिंग 1838 रे 38 रे एंड तापरे थियोडोर स्वान तुम टुगेदर रिपोर्ट करथिले कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड एनिमल जो रहिले भी रिपोर्टेड दैट सेल्स आर द थिन आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो तुम बुझी परिबोनी कि प्लांट पाखरे कोन अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अछि बाहर आतिला सेल वॉल प्रेजेंट अछि बट इन केस ऑफ एनिमल सेल एनिमल मानव पाखरे तांग पाखे कोन नहीं सेल वॉल इज एब्सेंट और बाहर गोटे थिन आउटर लेयर टी अछि दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन according to our Theodore Swan. He also found
that plant cells have cell wall. Plant pakhre cell wall achi boli छोटा wall କହିଥିଲେ छोटा swan କହିଥିଲେ and animal ମାନ ପାଖରେ cell wall ନାହିଁ ବୋଲି छोटा swan କହିଥିଲେ. So he proposed a hypothesis that animals and plants are composed of cells and the product of cells. So ଏଇଠି ଗୋଟେ basic question start ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ. What do you mean by your product of cells? So the question ଏଠୁ ହିଁ ବନି ପାରିବ. What do you mean by product of cells? Dear participants, what do you mean by product of cells? Abhinash, Abdu Sangam, Danta Higher Secondary School, Parjang Higher Secondary School, Priyasa, Ramaji Higher Secondary School, Sai Abhishek, Subhasmita. What do you mean by product of cells? What it is la product of cells. Cells are made up of two things na. हम कहले cells जो रहेला कि all plants, all animals are made up of cells and product of cells. So what exactly do you mean by product of cells? Product of cells रो माने कौन है? Anyone can answer this question? Okay, I got an answer. Cells work like tiny factories and whatever they make is called their product. Okay, but ମୁଁ ଏଠି ତ ଏତିକି ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି ସାଇ. My question is to you. Tissue. Yes, I is saying product of cells means tissue. Good. तो एठी काहे तले एमती कहला कि माने animals and plants are composed of cells. I can stop here. Then why I am writing that they are made up of product of cells? The cell is the basic structural, functional, fundamental unit of life. Then why am I going to call that plants or animals are made up of cells and product of cells? The and wala part पे काहे use करेंगे? Complements करेंगे. What may be the reason behind that? Yes, I got it. The group of cells, product of cells is called as tissue, but what is the message behind it? You have to think like this, okay? We can say plants are composed of cells, animals are composed of cells. So together I can say plants and animals are composed of cells. Full stop. But why there is a line, an extra word that is and products of cells? Then तुम कोई पढ़ते हैं plants eller animals eller organs भी परिवर्तन tissue कहीं कोई organs भी कोई भी organ system भी कोई भी. We know they are organisms. The organism ଭିତରେ organ system ଅଛି. Organ system ଭିତରେ ଆସିଲା ତୁମର organs. Organ is tissue. Tissue is cell. So ମୁଁ cell ତ କହିଲି, but why I'm talking about the product of cells? What is the need behind that? Any substance manufactured or secreted by a cell through its various metabolic process and organelles. Always use it correct. नहीं. Answer तुमने जो दो से answer तुम belong करते what is product of cells को. My question is why we are saying the product of cells? Why don't we stop here? ଆମେ ଏଇଠି କାଇଁ stop କଲେନି? କାହିଁକି ଆମେ ଆଗକୁ କଣ ପାଇଁ ଗଲେ? ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି answer ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି. ମୁଁ କହୁଛି thinking capacity develop କର କି ଏଇଠି ବି ତ ଅଟକି ପାରିଥାନ୍ତି. All plants and animals are composed of cells. I should stop here. तुम्हें आगो कहीं लिखिली product of cells बोली. तो कौन need कहीं गसला मते वाटर. तार सिंपल सा आंसर हेगला कि ना आमे एट जो ऑर्गेनिज्म माना कथा कहूचे प्लांट्स भी गोटे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी गोटे ऑर्गेनिज्म तो ये जो ऑर्गेनिज्म माने अछंती ये ऑर्गेनिज्म समस्ते गोटे टाइप रे नथांती. ठीक अछि. तो तमे सेल रो डिफरेंशिएट करिवो तमे जो क्लासिफिकेशन जे पढुछ सब बळे क्लासिफिकेशन ने कोन आस्ते पिला माने गोटे बेसिस थाय जो बेसिस तमे हम डिवाइड करिछि. तो ये जो प्लांट हैला कि एनिमल हैला बा एनी ऑर्गेनिज्म हैला ताको हम डिवाइड कर दीटा कैटेगरी थिला. गोटे हे गला तांकर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो सेठी आसला दी प्रकार ऑर्गेनिज्म गोटे ला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आ गोटे हे गला मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. आंसर बहुत तुमको
ये लगे कि इतने इजी आंसर थिला बोली, बट यस दिस इज द रीजन. The unicellular organisms, the bacteria, they are made up of single cell. So semano ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା କି they are made up of cells. But if I talk about multicellular organism, ये केवल सेल को नहीं तैयारी ही नांदी, कारण आम पाखे सिंगल टाइप ର सेल नहीं, आम पाखे various millions and billions of cells are there, trillions of cells are there. और सब जाक सेल तो कॉमन टाइप ର नहंती. ଆଉ किडनी सेल जेमते हार्ट सेल सेमते हार्ट जेमते लिवर सेमते नुहे, लिवर सेमते न्यूरॉन सेमते नुहे, न्यूरॉन जेमते बोन सेमते नुहे. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अछंती. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो रहिला कि ताकू ही सेमाने मिसेई देई कहले कि प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. समस्ते ओरिजिन कोट करछंती, हमर लाइफ रो सिंगल ओरिजिन कोट जाइगोट रो. हमर जो आज हमें जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म है कि अच्छे केमिकल फैक्ट्री इन दिस प्लैनेट अर्थ हमें अच्छे है जी. तो हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें शो करछे जी. इस हाईली कॉम्प्लेक्स सेल टी कोट आस्तिला फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड एज अ जाइगोट. तो जो सिंगल सेल जाइगोट थिला से जाइगोट ही आगो जे डिवाइड करछि ना, जाइगोट आगो जे फॉर्मेशन हेछि मोरुला, देन ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला, एंड देन फॉर्मेशन हे कि सेटे अबिका डिवीजन हेछि. हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ले जाउछु, हम पाखर अछि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. तो जो डर्म लेयर सब अछि हार्ट ओरिजिन करछि मेसोडर्म रो. ये जो सेल्स माने करे आछन, तो ऑल टुगेदर इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. But if I talk about unicellular organism, then I should write it is made up of cells. But when I'm asking about plants, asking about animals, so they are not only composed of cells, they are composed of many types of cells. I say many type of cells, so the cell a product ही ହେଇପାରିବ. Yes or no? That's why it is called as the hypothesis that I asked. Like if animals and plants are composed of cells and products of cells. କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ କିଛି ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ ବି ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ. ଆମେ ଆଲଗି କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରଖୁଥିଲେ, କିଛି ଆଲଗି ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ସେଲୁଲାର ଅଛନ୍ତି. ବୁଝିପାରୁଛ? फंगस को हमें कहूची यूकैरियोटिक, बट ईस्ट गोटे फंगस टी जी की होची यूनिसेलुलर. इट इज नॉट मल्टीसेलुलर, इट इज यूनिसेलुलर आसीबो. सैकारोमाइसिस सेरिविसी. So these are the simple topic you need to understand कि what is the reason behind of saying that the hypothesis animals and plants are composed of cells and product of cells. I hope तुमने बुझी पारथिबो. If any doubt, then you can again ask and I'll repeat the same. Is it clear? समस्या बुझ पाइल? Is it clear? आगु बढ़िबा. Okay. No. So then as the entry color scientist Sir Rudolf Virchow. Okay, Sai. Now entry color scientist Sir Rudolf Virchow in the year 1855, he explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cell. And in his language, he called it omnicellular e-cellular. जार meaning होची कौन ना new cells originated from pre-existing cell. तो देखिले कि हमर को भी add-on जेबे हेता से add-on में किछोटा रीजन थाए. जेमति कि हमारा प्लांट सेल जो हैला बा एनिमल सेल जो हैला सेल थ्योरी हमर असला कि all cells are all plants and animals or all living organisms are composed of cells and product of cells. But they have never mentioned what is the origin of this cell. ये cell ର origin किए कोठु आछि बोल तर existence केमति अछि, how it is made, where from where it is made. Then Sir Rudolf Virchow came and see तापर put light on it and से आंसर देले कोन कि ना cells जो माने अछंती ताकर origin को से बुझिले each and every cell or arises from the pre-existing cell. आगु जो cell टे exist करूथिला ताटे से मानसु आछंती और एटी कोन ना कोन cell cycle cell division statement से दबा start कले. And finally the modern cell theory जो बोलिला से modern cell theory दिटा statement आसिला कि all living organisms are composed of cells and product of cells and all cells arise from pre-existing cell. But two mark question to माने मन रखि परिबा regarding the cell theory. Who proposed the cell theory and ସେମାନେ कोन कहितले एक्जेक्टली प्रपोजल रे और देन मॉडिफिकेशन कोन हैला और मॉडिफिकेशन के करथिले और मॉडिफिकेशन हैला परे व्हाट इज द
extended version of cell theory. What we can say, what is the modern cell theory? Modern cell theory केटा postulates अछि, data postulates अछि provided by Rudolf Virchow. ठीक है जी, that all cells are composed of cells and product of cells, and all cells arise from pre-existing cell. That is the thing you need to remember. Next, असला कहता overview of cell जो तुम देखिबो, a cell contains cytoplasm. सब cell मान पे कौन जिंस अछि, cytoplasm present अछि. If you going to annotate this part, all cells contain cytoplasm. What is a cytoplasm? It is a semi-fluid matrix where cellular activities and chemical reactions occur. It कौन होची ना cellular activities होची and chemical reaction होची, and this keeps the cell in living state. Cell को living रखिबारे की help करची ना तो cytoplasm help करची. मन लगिला cytoplasm, cyto माने एटे हेगला गोटे word रा, cyto माने हेगला एटे cell. Cyto means cell and the plasm ହେଇଗଲା fluid, semi fluid. Cyto ହେଇଗଲା cell, plasm ହେଇଗଲା semi fluid matrix where the cellular activities are ଭିତରେ cell ସବୁ ଯାକ activity ହଉଛି. Let's say ମୁଁ କହିଲି କି respiration, ଠିକ ଅଛି, I am talking about respiration. Respiration ର ଗୋଟେ example ଆସିବ କଣ ଅବିକା, respiration ମାନେ ହେଲା या तो aerobic respiration होतो या तो anaerobic respiration होतो. Yeah, it can be aerobic respiration, it can be anaerobic respiration. तो जो respiration process टी होची, ये aerobic हो कि anaerobic हो, गोटे type respiration थिला, that is commonly called as glycolysis. और ये जो glycolysis है गला, ये glycolysis टी कोटु है थाए, और location कौन, और location होची cytosol. And what is cytosol? The cytosol is the semi-fluid material of the cytoplasm. तो ये cell लो एक काम एट होची. ये जो ribosome होची, हम ribosome, it produces proteins. We all know ribosome is the protein factory. Ribosome is the protein factory. It produces proteins in the cell. Now the question is, where it produces the protein? The process is called as translation. And where does it occur? It occurs inside the cytoplasm. So, आर खासियत कौन है पिला माने ना cytoplasm जो अछि, ना cytoplasm is the semi-fluid matrix where all the cellular activities like the glycolysis, energy production हो, protein synthesis हो, carbohydrate formation हो, lipid synthesis हो, बट किसी में बनुछ हम बॉडी भीतर सेल भीतर तो सब को जगह होची, it occurs inside the cytoplasm. Now, ribosome, it is a non-membrane organelle. मन रखिबा ribosome होची कोन ना, it is the non-membrane bound. Non-membrane माने आ पाखरे कोनोसी membrane नहीं, और जेहेतु membrane नहीं, it is found in both prokaryotes, as well as in eukaryotes. ठीक है जी, prokaryotes माने पाखरे देखिବାକୁ मिलिଥାଏ, eukaryote माने पाखरे देखिବାକୁ मिलिଥାଏ. आको हम कोन कहते ribosome बोली कहिचे. It is a non-membrane organelle found in the cytoplasm, chloroplast and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. A words of Mandakyo. ये को जगह अच्छी, it's present in case of chloroplast, it's present inside the mitochondria, it's present inside the endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum surface में present अच्छी, अदला cytoplasm present अच्छी. तो ribosome versus details से पढ़ियो तमे जानिबा overview रे, मु तुमको ए पार्ट टा आगु नै कहूची. पूरा blank slide थिला पिला माने, हां 8. If I talk about this ribosome, you can note it down also. It was discovered by ribosome को 1953 रे discover करथिले. साइंटिस्ट का नाम होची जॉर्ज पैलेडे. George Palade was the scientist who discovered ribosome in the year 1953. ये ribosome जो होची, it is a non-membrane bound structure. It is a non-membrane bound cell organelle, and that is the reason why it is present in
both prokaryotes and eukaryotes. You will find it in all bacteria, all fungi, all plants, all animals, समस्त प्रकार को पाई परिबो. Then in case of prokaryotes, here PK stands for prokaryotes. In case of prokaryotes, it is present inside the cytoplasm. It is present only inside the cytoplasm. This thing you need to remember. Our co-type type but in case of eukaryotes, eukaryote कथा कहिबा, then eukaryote भी दी प्रकार आसीला, plants जब देखिबी, animal जब देखिबी. If I am talking about eukaryotic plants, ताले plants पाखरे माने को जगह थिबे, चारटा जगह अछि. कोन ना inside the cytoplasm भितरे थिबो. Number 2 आउ कोटे अछि inside the mitochondria भितरे अछि. Then on the surface of RER stands for rough endoplasmic reticulum, and last asivala and inside chloroplast. Inside chloroplast. এই জায়গায় আছে. If I talk about plants, eukaryotic plants যে কথা হবে, তাহলে কোন জায়গায় আছে? Inside the cytoplasm, inside the mitochondria, and on the surface of rough endoplasmic reticulum and inside chloroplast. But if I talk about in eukaryotes, that is in animals, if I am talking about only animal cells, then it is present only in the cytoplasm, it is present in the mitochondria, and it is present in the rough surface of the rough endoplasmic reticulum. जेहेतु animal मान पे chloroplast न थाए, तो एठी भी राइबोसोम नाही. ये हैला बेसिक जिंस. Then ये जो राइबोसोम टी अछि, how it is made up of, कहा को नहीं तैयारी छी? ना, it is made up of two things. It is made up of two things. ଆଉ ସେ two things रे की केसला पिला माने two things आसले जोड़ा जिंस ना. One is your ribosomal RNA, and second part is ribosomal protein. आकु नहीं तेरे ribosomal RNA and ribosomal protein को नहीं तेरे ची के ना हमरा ribosome तेरे ची. Our types कितने आसिला ना? It is about two types. It is of two types. ଆଉ ସେ two types की आसिला ना, गोटे हे गला 70S ଆଉ गोटे हे गला 80S. And here S stands for ये जो S word टी अछि, S माने हे गला एटे पिला माने Spedberg's unit. Spedberg's unit, or you can call it as sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient पे कहे जाए जहाँ द्वारा हम देखो जे कि आर को जगह रे डेंसिटी शो कर जे को जगह से माने कि सेडिमेंट होचे. Then आगे पे पुंडीटा सब यूनिट अछि ना, जो two sub units are there. और से two sub units रे के आसिले ना, one is a large sub unit and second is small sub unit. If I talk about this 70S type, is 70S इटा sub unit आसिला. Large is called as your 50S and small is called as your 30S. But if I talk about this 80S ribosome कथा देखिबी, ताले 80S पाखरे large की पड़ा आसीबो. Large one is your 60S and your small one is called as 40S.
ये जिनस को मैथमेटिकली एडिशन कर दबो नै 60 + 40 = 100 नुहे एटा 60 40 मिसी 80s होचंदी कारण एठी एडिशन हेनी एमन आपस में मिसी के रखंदी और तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट ही हम एटे देखुचे ना। तो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू अबाउट राइबोसोम। तो तमे पढुते ना सेल रो ओवरव्यू। तो सेल भीतर गोटे ऑर्गेनेल राइबोसोम and that ribosome is made up of what? They're made up of ribosomal RNA, ribosomal protein। ଆଉ ये डी टाइप रो थांदी 70s 80s। एटी 70s रो माने कोन एटी 80s रो माने कोन ए पार्ट जो डिटेल साइड बुझी पाई। देन द स्पेडबर्ग्स यूनिट कह जाय इज क्वेटी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट विल कह जाय। ଆଉ it is a non membrane bound cell organelle। It is present in both prokaryotes as well as in eukaryotes। In case of prokaryote, it is present inside the cytoplasm। In case of eukaryote, it is present in your cytoplasm, mitochondria, and on the surface of rough endoplasmic reticulum, as well as in the सेती थिबो एंड प्लांट पाखरे थिबो क्लोरोप्लास्ट पे एक्स्ट्रा थिबो एमन सब। देन तो ये वाला जिनस आपको एक स्क्रीनशॉट नहीं जाओ मैं लिखि दियो चॉइस इज योर्स। एनी डाउट पिला मन नहीं जाएंगे you can take a screenshot or you can write it down that one choice। बुझिबा shall we move ahead? Yes or no? No। So you have non तमन जान लो साइटोप्लाज्म विषय जान लो देन राइबोसोम विषय जान लो। नाउ लेट्स कम टू द ओवरव्यू ऑफ द सेल। एटी किछ बेसिक क्वेश्चन अछि जोटा तमर एंट्रेंस हमो हेल्प करिवो। वन इज द स्मॉलेस्ट सेल। तमर स्मॉलेस्ट सेल ना हे गेला कोन एटी पिला माने माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट सेल। इट हैज 0.3 micrometer in length और एमन को हम स्मॉलेस्ट सेल बोली कहउचे एंड आल्सो दे आर कॉल्ड एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। मन रखिबो दिस माइकोप्लाज्मा आर कॉल्ड एज व्हाट? Joker of plant kingdom। Next, it is a if ribosomes are non-membranous, why does their attachment to RER change the type of proteins to synthesize? Types of protein synthesize माने कौन कहे संचयटी ये जो RER जब से अटैच ही जाउछंती ओके तो प्रोटीन साइज ता डिफरेंट डिपेंड करछि कहा पर एटी ना कि प्रोटीन साइज डिपेंड करछि कि से केमिति मॉडिफाई हो। प्रोटीन जो अछि प्रोटीन डिफरेंट स्ट्रक्चर अछि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी और प्रोटीन टी मॉडिफाई करोछि के जिंस टेकु ना हमर राइबोसोम रो काम सइला परे एबे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो प्रोटीन टी बाहर के जाई थाए गोल्गी कॉम्प्लेक्स भितर। तो आगो क्लास माने कर जानिबो एटा पढेबी हमर अछि एटा वेडनेसडे के बोर्ड क्लास अछि सेना हमें पढिबा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विषय और से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रे कहा बात आसीबो फर्स्ट आसीला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकंड आसीबो गोल्गी कॉम्प्लेक्स और से गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी apparatus जो अछि ता पाखरे दुटा एंट्री गोटे एंट्री गोटे एग्जिट अछि गोटे ला सीस फेज फॉर्मिंग फेज और गोटे मैच्योर फेज पर हमर आसी गला ट्रांसफेज। तो जब सीस फेज से एंट्री करछि के प्रोटीन टी जो प्रोटीन टी कॉमनली फॉर्म हे के जाईछि से आगो जाय के मैच्योर हे के सेटो बाहर को भाछि और साकू हमें ग्लाइकोप्रोटीन बोली कहउचे और सेट द स्ट्रक्चर भी चेंज होछि। राइबोसोम मन रखिबो इट्स अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल आ चारिपटे किछि मेम्ब्रेन नाही कोठ भी मेम्ब्रेन चारिपटे नाही
और राइबोसोम जो अच्छी से दीटा का यूनिट सब अलग अलग ही थांती मतलब कहना 70 30 और 50 स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट से सेपरेट ही थांती जेबे सेमाने को प्रोटीन बनेवार अछि प्रोटीन बनिया पे दरकार कोन इनफॉरमेशन से इनफॉरमेशन दउछि किए ना न्यूक्लियस दउछि न्यूक्लियस रे कोन अछि एमती ना डीएनए अछि आ से डीएनए तो निजे बाहर को आस परिबोनी तो डीएनए कोन करछि ना तार गोटे मेसेंजर को बाहर को पठौछि से मेसेंजर ना हे गेला एमआरएनए और जेबे से एमआरएनए न्यूक्लियस रो बाहर की न्यूक्लियर रो मेम्ब्रेन रो डबल मेम्ब्रेन अछि न्यूक्लियस रो पोर देख से बाहर की आसीबो सेही राइबोसोम सेही जो एमआरएनए सारी पटे राइबोसोम नहीं बाइंड हेजिबे तळे बसिबो 30s ऊपर बसी गला 50s बुझियोछि तो 30 और 50 दी पड़ता कवर कर रखिबे आउ ता मध्य रे की जाईछि एमआरएनए जाईछि तो ताकू स्टडी करी की रीड करी की प्रोटीन फॉर्मेशन हवा स्टार्ट कर तो इनिशियली जो प्रोटीन बनिछि दैट प्रोटीन इज प्राइमरी प्रोटीन and प्राइमरी प्रोटीन माने कोन हे गेला तुम एटा बायोमोलिक्यूल चैप्टर जूलॉजी रे पढुथिबो प्राइमरी प्रोटीन हे गेला कि जार एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्वाइट विजिबल अछि सी हे गेला प्राइमरी प्रोटीन ठीक अछि प्राइमरी प्रोटीन जदि मु तुमको बुझियो चाहिबी you can see me in the screen so suppose I am talking about these are the protein so let us assume this is the this is the N terminal this is the C terminal ठीक अछि ये N और C कोन हे गला ना अमीनो एसिड्स मानकर एंड लागि थांती अमीनो एसिड्स जो अछि अमीनो एसिड गोटे साइड रे N अछि NH2 गोटे गोटे COH अछि तो लेट्स से दिस इज द N terminal this is the C terminal तो एमाने जदि क्लियरली विजिबल अछंती देन दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोटीन जेते बेले माने मॉडिफाई होचंदी एमाने मॉडिफाई हैला बेलको एमाने आपस में मिसी गले N और C मिसी गले पुणे माने आउट फोल्ड हे गले पुणे माने फोल्ड हे गले दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन ठीक अछि जो सेकेंडरी बनेइली यदि एई वाला फॉर्मेशन हेचन दैट इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स माने अल्फा हेलिक्स बनेइछंती नहर से माने कोन करि परिबे ना बीटा प्रोटीन भी करि परिबे एठु एमदी चेंज हे परिबो एटा एपड चेंज हबो एठु चेंज हबो पुणे एटा एपड चेंज हबो पुणे एटा एपड चेंज हबो तो माने एभलिया करी कि एन और सी के आपस में मिसिबेनी एन अलगा रहिला सी अलगा रहिला दीटा को अलगा अलगा छन बट स्टिल से माने फोल्ड हे जाइछन तो ये गला बीटा प्लेटेड अरेंजमेंट हेला तांकर ये सइला परे पुन से आहुरी मॉडिफाई हे के टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेबे आ से आहुरी मॉडिफाई हे गला परे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेबे तो राइबोसोम रा शेप ता हमर प्रोटीन फॉर्मेशन ऊपर डिपेंड करेनी प्रोटीन फॉर्मेशन हे सारला परे प्रोटीन मॉडिफाई होबा को जाउची कहा भीतर को ना हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो बाहर की गोल्गी apparatus को एंट्री करिवो गोल्गी apparatus सिस फेस रे एंट्री करिवो ट्रांस फेस रे एग्जिट मारिवो और तार भीतर जो सिस्टर्नी माने अछन सिस्टर्नी प्रेजेंट अछंती सेही बात दे गला वर्ड का शेप ता है चेंज आई होप तुम बुझी पाइथिबो जदि भी किसी डाउट रहिला यू कैन आस्क इट ओके नेक्स्ट आमे पढ़ले माइक्रोप्लाज्मा द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल हेला से एग ऑफ ओस्ट्रिच देन लॉन्गेस्ट सेल जो देखे त न्यूरॉन सेल से एगला हमर लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल पे हम कहूचे एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर ऑल आर फैक्चुअल क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड ह्यूमन आरबीसी एगला 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर ये सब जिंस मन देखो आरबीसी जो अछि से एगला स्फेरिकल शेप रो ओवल शेप रो यू कैन सी दिस इज द आरबीसी ताको तमे सेल बोली कहउछ बट एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज corpuscles RBC stands for red blood corpuscles अब जो corpuscles हो गला इट्स अ टाइप ऑफ सेल नॉट एग्जैक्टली अ सेल इट्स अ टाइप ऑफ सेल ताको हम कहउछ corpuscles बोली कहउछ RBC ठीक अछि आ ये हेगला तुमर देखो सेल बाहर साइड रहिला लिपोप्रोटीन भीतर अछि डीएनए दिस इज राइबोसोम दिस इज आरएनए दिस इज मेटाबोलाइट्स everything is written over here cell रे कौन जैसे थांती ये जो ostrich एक जन हो गला और साइज बहुत बड़ा था 15 सेंटीमीटर अराउंड थांती माने why mycoplasma is called joker of plant kingdom okay mycoplasma जो होछि आ चारि पटे किए नाही सेल वाल प्रेजेंट है हमें जानिछे कि सेल प्लांट किंगडम रे सेही माने ही रहिबे जो माने पे सेल वाल अछि हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ने जब डिवाइड करथिले एंटायर लिविंग वर्ल्ड को फर्स्ट असले कैरोलस लिनियस जे डिवाइड कर दिले कि प्लांट और एनिमल डीटा अलग अलग किंगडम हे छि परे असले कि तापरे
three kingdom classification, then four kingdom on cycle answer three kingdom classification, then Bentha Mukher four kingdom classification, कहाँ plus ला five kingdom classification RH Whittaker. तो ये जो 1969 में RH Whittaker ने कैसे five kingdom classification. तो हमें जो divide करूँ से division नोट basis थिला. First हमें divide कले को basis रे on the basis of type of cell. केमितिया cell अछि. Whether it is a prokaryotic cell or eukaryotic cell. So all prokaryotic cell belongs to kingdom Monera and rest to eukaryotic cell रहिले तांका ପାଇଁ चारटा kingdom रखा है. तो मोनोरा भितर को मान रहिले ओनली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स माने रहिले. जब हम आसिले कोठी कि आउ चारटा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमलिया पुणे में डिवाइड कर देले ना ऑल दोज यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक से बिलोंग करले प्रोटिस्टा को एंड रेस्ट जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक रहिले सी हे गेले बे कहा को ना से माने बिलोंग करिवे टू योर प्लांट नले एनिमल नले फंगी को बिलोंग करिवे. अगेन हमें आसिले कोठी कि ना जो तीनटा भितर फोन डिवाइड करले को बेसिस रे ना एमाने को माने निज फूड फॉर्मेशन करि परछन देन हु आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर मल्टीसेलुलर हेतिबे यूकैरियोटिक हेतिबे सेल वॉल भी अछि एंड तासले से माने कोन करछन ना फूड बनौछन और फोटोसिंथेसिस करछन सी हे गेले किंगडम प्लांटी. तो किंगडम प्लांटी रे प्लांट किंगडम रे प्लांट्स माने गोटे बेसिस जिंस हम देखि तामे कोन अछि सेल वॉल अछि एले माइक्रोप्लाज्म पाखे सेल वॉल नहीं. यू डू नॉट हैव अ सेल वॉल एंड ये को भी जो रेजिस्ट कर जाउ जेटा पे सेल वॉल ने आको मारिया पाई भी कष्ट हे गेला आको कोनोसी जो हमर एंटीबायोटिक्स जो पिला माने हे गेला एंटीबायोटिक्स आप असर करिवे नै कारण एंटीबायोटिक रो मुख्य काम कोन थिला या तो गोटे से स्ट्रक्चर को मारी दबो बैक्टीरियल सीडल ना बैक्टीरियल स्टैटिक ई प्रकार एक्टिविटीज अछि तो आर सेल वॉल जे तो नाही ये ताको मारी परिबो. दैट्स व्हाई आ बहुत छोटो भी अछि कोड भी एंट्री कर परिबो ताको कहयो चक्कर प्लांट किंगडम भी कहा जाउछि कहा को माइक्रोप्लाज्मा को बन रखे पार्टी. It do not have any kind of cell wall. तेणु आ ऊपर किसी भी एंटीबायोटिक रो असर हबो नै. एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन kanamycin streptomycin chloramphenicol these are the different kind of antibiotics और आर असर आप देखा छिबो नै. Then as like Hathavika, based on the functions, based on the shape of the cells, may be disc-like, polygonal, cuboidal, thread-like, irregular. तो सेल्स दी प्रकार थाने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और आंकर स्ट्रक्चर को नहीं कि आंकर शेप को नहीं कि हमें ताको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होई परिबा. ये डिस्क शेप रही परिबे पॉलीगोनल ही परिबे क्यूबॉइडल ही परिबे थ्रेड लाइक ही परिबे इरेगुलर शेप पर सेल्स ही परिबे. हम देखि परथुबो एटी नॉर्थ सेल जो अछि तार गोटे सेल बॉडी बा साइटोन अछि नॉर्थ सेल पाखे की अच्छी सेल बॉडी और साइटोन इज देयर इधर हे गला सेल बॉडी और साइटोन आ एठु के बाहर को तार लंबा एक्सॉन टे बाहर छी आ ए मानसु तार डेंड्राइट माने सब बाहर को बाहर छी. देन जो डेंड्राइट्स रहिला इ तार सेल बॉडी साइटोन रहिला और लॉन्ग सिलिंड्रिकल एक्सॉन गोटे बाहर को बाहर जार एंडर सिनेप्टिक नर्व माने प्रेजेंट थिबे. ठीक अछि. तो ये गला बोन सेल ए भला देखिया पई बोन सेल ये गला मसल सेल आज सब फिलामेंट अछि एक्टिन फिलामेंट ठीक अछि मायोसिन अछि एक्टिन अछि फिलामेंट आई बैंड जेड बैंड एच बैंड ये आगो जाई हम पढिबो. ये गला स्पर्म मन देखो स्पर्म केडी कुनिटा अछि आर ओटे हेड अछि गोटे तार नेक अछि गोटे तार अबिया मिडिल पर्सन और ओटे टेल आ ओवम ये होची नॉन मोटाइल साइज देखो जो कितने विराट बड़ा साइज है ये लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल ये ला स्मॉल हेगला स्मॉल हेगला स्मॉल आउ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का में oogamous बोली कहिथाउ where the female is non motile and larger and male is motile and smaller it is called as oogamous type of fertilization. the oogamous होची reproduction माने sexual reproduction different types ला isogamous anisogamous and oogamous ये बिलोंग करछि oogamous को कहीं की एठी फीमेल जो अछि फीमेल इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल ओवम कोड चली की जाई परिबो नहीं का पे फ्लैजेला नहीं बट स्पर्म जाई परछि बिकॉज़ इट इज हैविंग अ फ्लैजेला का पे फ्लैजेलम प्रेजेंट अछि. तो से पे हमें oogamous बोली कहू डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो अछि सेल्स माने ब्लड सेल्स हम लेबो आरबीसी डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूसी की पुनी के अछि ना लिम्फोसाइट मोनोसाइट ग्रैनुलोसाइट आयग्रानुलोसाइट योसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल तो डिफरेंट टाइप जो सेल्स माने अछि ताकर स्ट्रक्चर अलग अलग अछि
ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ପାଇପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ଆନିମାଲ କେସ୍ ରେ। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେସ୍ ଦେଖିବ ପାରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି, କୋଲେନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଲଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି, ସ୍କ୍ଲେରେନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଲଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି, ଆଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଙ୍କର ସେପ୍ ଆଙ୍କର ସାଇଜ ଆଙ୍କର ନମ୍ବର ଏ ସବୁ ଅବିକା ଡିଫର କରିବ। କ୍ଲିୟର? କାରଣ ସେ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ରିଜିନ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ରିଜିନ ଅଛି କାହିଁକି ଆମେ ଡିଫର କରିଥାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ତମେ ଆଗୁଆ ପଢିବା ଆଗକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଏନେ ଡାଉଟ ପିଲାମାନେ? ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିବା ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସକୁ ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଓକେ, ତ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସରକୁ। ଦେ ହାଭ୍ नो membrane bound nucleus and organelles, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି membrane bound nucleus ବା membrane organelles ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତି। They include bacteria, they include blue-green algae, they include mycoplasma, they include PPLO, pleuropneumonia-like organism, and they are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells, and they vary in shape and size. ତାଙ୍କ shape ଆଉ size ସବୁ vary କରିବ, ଆଉ ଏମାନେ more rapidly divide କରିଥାନ୍ତି as compared to eukaryotic cell. eukaryotic cell ଯେମିତି divide କରିଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ size small ଅଛି ତ ଏମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି division କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତମ ମନେ ରଖିବ। Yes, ये बैक्टेरिया ଥାନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଜମା ଥାନ୍ତି। ମେନ୍ ଏବେ ଆସେ क्वेश्चन आंसर। बैक्टेरिया सेप आकृति ସେମାନେ ଚାରି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବେ on the type of on the basis of cell type। ତ बैक्टेरिया सेप କୁ ନେଇକି ଚାରି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବେ, या तो rod like ହେଇଗଲା bacillus, या तो rod like ହେଇଗଲା bacillus, ନହେଲେ ଅବିକା କୋକସ୍ ହେଇଗଲା spherical, ନହେଲେ vibrio ହେଇଗଲା କମା shape ର, ଆଉ ନହେଲେ ସ୍ପିରିଲମ୍ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ସ୍ପିରିଲମ୍ ହେଇଗଲା ତମ ସ୍ପାଇରାଲ shape ର। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସ୍ପିରିଲମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯଦି ଆସିଲା ଅବିକା କୋକସ୍ ଯଦି ଦେଖିବ, ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ଟି ଅଛି, ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଟି ଅଛି, ଆର ନାଁ ହେଇଗଲା ମୋନୋକୋକସ୍। ଆର ନାଁ ମୋନୋକୋକସ୍, ମୋନୋ ମାନେ ୱାନ୍। ଯଦି ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆର ନାଁ ହେଇଗଲା ଡିପ୍ଲୋକୋକସ୍, ଡାଇ ମାନେ ହଉଛି ଦୁଇ, ମୋନୋକୋକସ୍ ନହେଲେ ଡିପ୍ଲୋକୋକସ୍। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଚେନ୍ ବନେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକସ୍। ଚେନ୍ ବନେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକସ୍। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇକି, ନଟ୍ ଲଟ୍ସ ଅଫ କୋକସ୍ आपस में मिसी गोटे ग्रुप टे बनेइचंती, देन दैट इज कॉल्ड अ स्टाफाइलोकोकस। आर ना चेंज हे जो कोन देखो पिला माने, आर नाटा इट लिखुची, दैट इज कॉल्ड अ स्टाफाइलोकोकस। ठीक अछि। तो बैक्टीरिया टी कते प्रकार हे पहिला ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप रो आधार रे बैक्टीरिया केते प्रकार हे परिबो, चारि प्रकार हे परिबो। कोन कोन? मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफिलोकोकस। क्लियर त? ए पार्टा मन रहियो, कारण कोकस काल तो बुझी गेला राउंड अछि, हेले कोकस भी टाइप ऑफ अछि। गोटे थिले मोनोकोकस, जेटा थिले डिप्लोकोकस, बहुत सारा लंबा ही थिले चेन बनै के अछंती स्ट्रेप्टोकोकस। और एग्जांपल हेगला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक अछि। स्ट्रेप्टोकोकस रे एग्जांपल हेगला गोटे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। आउ एई जो बैक्टीरिया टी अछि, ये को डिजीज करे थे जानि छटी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये जो बैक्टीरिया ता जीनस नेम ता स्पेसीस नेम सेपरेटली अंडरलाइन कली। आउ ये को डिजीज करे थे ना निमोनिया डिजीज करे थे। हम जो निमोनिया डिजीज को छै जो सन्निपात रोग हुए निमोनिया, तो डिजीज द पॉजिटिव एजेंट होछि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सेमती हमर सुनिथिबो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, वर्ल्ड रो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करथिले किए? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା ନା ଥିଲା ପେନିସିଲିନ। ତ ପେନିସିଲିନ ଆସିଥିଲା କୋଉଠୁ? ପେନିସିଲିୟମ ନୋଟେଟମ ରୁ। ଆଉ ସେ ପେନିସିଲିୟମ ନୋଟେଟମ ଯୋଉ ଅଛି ସେ କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ବନେଇଥିଲା? ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ତାର ନାଁ ହଉଛି ଷ୍ଟାଫାଇଲୋକୋକସ୍ ଅରିୟସ୍। ତାର ନାଁ ଥିଲା ଷ୍ଟାଫାଇଲୋକୋକସ୍
Underline kali aureus. Against the प्रथम penicillin बनଥିଲା. Was the first antibiotic penicillin was discovered by Alexander Fleming. ଆଉ ସେ କାହା against ରେ ବନେଇଥିଲେ ଏଇଟା? Staphylococcus aureus was the weapon. Staphylococcus aureus ତା against ରେ ବନେଇଥିଲେ. Jerome Pop. ତା against ରେ first ଏଇଟା ବନିଥିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ. Clear? Now ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି ନା ସେଲ୍ କଣ କଣ ପାର୍ଟ ସବୁ ଅଛି ସେଲ୍ ଏନଭେଲପ ମେସୋଜୋମ and chromatophores nucleoid flagella pili fimbriae ribosome and inclusion body these are the basic overview of a cell ଆଉ cell ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଅଛି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି କ୍ୟାପସୁଲ ଅଛି ତ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ତମେ ଏଇଟା ପଢିବ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ ରେ ଆଉ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ସେଲ୍ ର ଡିଟେଲ୍ସ ତମେ ଜାଣିବ ଜିନିଷଟି ଷ୍ଟିଲ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇ ଦେବି କି କଣ ପାର୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସେଲ୍ ର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ତିନିଟା ଲେୟାର ତମେ ପାଇଯିବ କଣ ତିନିଟା ଲେୟାର ତମେ ପାଇବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ତିନିଟା ଲେୟାର ତମେ କଣ ପାଇଯିବ ସବୁଠୁ ବାହାର ପଟେ ଥିବ ଗ୍ଲାଇକୋକ୍ୟାଲିକ୍ସ ଦେନ୍ ତାପରେ ଥିବ ତାର ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ କରିକି ଆସେ ସେଲ୍ ର ୱାଲ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିବ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ and ସବା ଲାଷ୍ଟ ଥିବ କି ପାର୍ଟ ନା ସେଲ୍ ର ମେମ୍ବ୍ରେନ तो ये तीनटा को पार्ट मिसिकी कौन फॉर्मेशन करूचंती तार सेल एनवेलप ताको मैं सेल रो एनवेलप बोली कहूची इन केस ऑफ बैक्टीरिया ठीक है एई जो ग्लाइकोक्यालिक्स टी अछि पिला माने ये पुणी अगेन टू टाइप रे हे परिबो बेस्ड ऑन देयर साइज तो साइज अकॉर्डिंग तीन प्रकार हे परिबो या तो गोटे थिबो थिक दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल और गोटे थिबो थिन दैट इज कॉल्ड एज द स्लाइम लेयर ये डिफरेंट टाइप रे हे परिबो दीटा को हम ग्लाइकोक्यालिक्स ही कहूचे जने से थिक अछि मोटुटे अछि ताल से गेला कैप्सूल जने पतलाटी अछि त दैट इज कॉल्ड अ स्लाइम लेयर ଆଉ ତା ସହିତ ତା ପାଖରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ ବି ଅଛି and all together they are called as what they are called as cell envelope ତାକୁ ଆମେ cell envelope ବୋଲି କହୁଛେ ଇଏ ଆମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବ in case of prokaryotes they do not have a nucleus instead of nucleus they are having another structure called as nucleoid ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛ these are the nucleoid ଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ nucleus ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଚାଉମିନ ଭଳିଆ ମ୍ୟାଗି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତମକୁ ଏଠି ଇଏ ତାର ସବୁ କ୍ରୋମାଟିନ୍ସ ମାନେ ଡିଏନଏ ମାନେ ସେପାରେଟ ହେଇକି ପଡିଛନ୍ତି ଅବିକା ଆଙ୍କ ଚାରିପଟେ there is no membrane bound cell organelle ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ନାହିଁ clear then they do have ribosomes can you tell me which kind of ribosome they do have I have already talked about plasma membrane I have talked about cell wall I have talked about capsule they all together called as what they all together called as your cell envelope now let me know what do you mean by this ribosome रे को type ribosome अछंती I'm waiting for your answers the participants Avinash Abu Chirasmita Priyasa Ramaji Sai Abhishek Subhasmita then tell me which kind of ribosome is present in the bacterial cell yes Priyasa the correct answer is 70s 70s type ribosome mane thanti yes Chirasmita correct answer 70s ribosome present thanti Sai Abhishek भी correct answer ଦେଇଛି ତା ମାନେ ଏବେ ରେଡି ଅଛ ଆମେ क्वेश्चंस राउंड को ଯିବା ତ ଏଇ ପାର୍ଟ ତମେ ଜାଣି ପାଇଲେ ଗୋଟେ ବେସିक ओवरव्यू ଥିଲା ଏଟା yes Abu Sangam correct answer is 70s okay now we'll quickly move to the next segment that is the question answer round and question answer round रा पार्ट टाको सारिबा चलो स्टार्ट कर लिया आज क्वेश्चन आंसर so which of the following is the most accurate statement regarding the cell as a unit of life the cell as a unit of life रे most accurate answer कौन हबो आंसर कहलेनी कि चिरस्मिता आंसर देछि कि 1 रो बी all cells arise from pre-existing cells by mitosis the structural and functional unit of all prokaryotic and eukaryotic organisms is the cell metabolic reaction can occur outside the cell in living organisms and the genetic material in all cells is always enclosed within a nuclear envelope
So which of the most accurate statement regarding the cell as unit of life? So clearly देखा जाउछि सबुटु बड़ा ऑप्शन जोटा अछि that is the correct answer and से बड़ा ऑप्शन देखुछि कोटा ऑप्शन नंबर बी and the answer होछि कोन option B, that is the structural and functional unit of all prokaryotic as well as eukaryotic organism is the cell. Cell होछि सबुटु structural and functional unit. चलो question number 2 को the observation of cellula in cork slices by Robert Hooke was significant because he discovered living protoplasm within them. He coined the term cell for the basic structural unit. He demonstrated that cells could grow and divide. He proved that all animals are made of cells. देखो प्रथम कथा ये प्लांट सेल रे काम करथिले तो एनिमल रो चांस भी नहीं सेल डिवाइड करिया कथा से बिल्कुल भी कहि ना कारण से डेड सेल को देखते डेड सेल तो मला थिला he discovered living protoplasm living word से तो रॉबर्ट हुक से किछि भी लेन देन नहीं the correct answer is he coined the term again option B is correct answer he coined the term cell for the basic structural unit of life then question number 3 the protoplasm theory Hofmeister 1867 was an important modification to cell theory ये जो बाकी आंसर तुम केम दे दो चाहे तुम एठो देखि देइछ कि पिलेमान अबिका आंसर दे सलेनी कि 1 2 3 4 5 6 7 बाबू संगम बोल सलेनी सी फास्ट अछि पूरा प्लाटी जो पीडीएफ पाई जाई जी पीपीटी से तो कहलानी अबि कोन हम सेमे तो मु भी लिखि देबी वन बाय वन जिबा हमें तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो कथा आसिला अबिका हां एटा कोन आंसर कोन हबार और आंसर अब दैट द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज द बेसिस ऑफ लाइफ एटा मन रखियो लिविंग कंटेंट ऑफ सेल is the basis of life. The first question option is P, second will be option B, third will be option B. मन रखिए पार्टी. All cells must possess a nucleus. दे माने नाही ए जिंस रे कारण समस्त में न्यूक्लियस रही परिबो नाही प्रोकैरियोट सेल पर न्यूक्लियस नाही स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर ये कथा भी से कहि नथिले और रोल ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल भी से जड़ाई नथिले ठीक अछि तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी also 4 number 5 number को a scientist isolates a new organism that lacks a nucleus has 70 ribosome and possesses a cell wall containing peptidoglycan. This organism challenges which aspects of the classical cell theory. The classical cell theory को part which कहला all living organisms are composed of cells correct समस्या are composed of cells असने ठीक अछि the cell is the basic unit of life ये भी correct all cells are places ये भी correct it does not challenge any aspect it is a prokaryote बस this is the right answer टॉकिंग अबाउट पेप्टिडोग्लाइकन ना पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ पे थाए बैक्टीरिया पाखरे थाए और से बैक्टीरिया जो रहिला विकास ये कहा को बिलोंग करछि प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करछि सब कोई कथा एति तापर गेला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग सेल डिस्कवरी हमें कोन कहथिले की कोन लिवन हु कटले फर्स्ट टू ऑब्जर्व फ्री लिविंग सेल्स स्लेटिन proposed that all plants are made up of cell swan proposed that all animals are made up of cell and virco first to observe the nucleus ये सब ठीक अछि केवल लास्ट पार्ट ता भूल अछि काहे की भूल अछि ना रॉबर्ट विर्को न्यूक्लियस देखि नथिले न्यूक्लियस को देखितिबा से महान लोक को ना रॉबर्ट विर्को रुडोल्फ विर्को नो ताको ना होची कोन रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस साइंटिस्ट का ना होची रॉबर्ट ब्राउन ठीक अछि एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1 2 एंड 3 पिनामाने केते सब आंसर देलेनी लेट मी चेक चिरस्मिता सिंह 5 नंबर ए प्रिया सर 5 नंबर ए साई अभिषेक 5 नंबर ए करेक्ट समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आंसर सब जाओ ठीक ठीक देथिबारु then multinucleated sinusitic structure found in some algae and fungi
Yes, la multinucleated sinusitic structure. Algae fungi pakai thayandi. Kon ପାଇଁ ki support the cell theory as they are formed by cell fusion are an exception to the cell theory as they are not divided into cells. Support cell theory as each nucleus governs a distinct cytoplasmic unit are an exception because they arise from spontaneous generation. चलो क्वेश्चन नंबर आसो एबे क्वेश्चन नंबर 6 को आसो क्वेश्चन नंबर 6 ର आंसर कोन देलन देखिदा टिके आंसर 6 ର B इथला आसी B वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 6 ର आंसर होची B is the correct answer पिला माने एठी they are the exception to cell theory as they are not divided into cells काहे कि ना एठी the cell जो होची न्यूक्लियस जो होची एठी खाली न्यूक्लियस डिवाइड करची न्यूक्लियस डिवाइड करि गेला फोर न्यूक्लियस डिवाइड करि गेला फोर न्यूक्लियस डिवाइड गेला फोर न्यूक्लियस डिवाइड गेला माने गोटे सेल अछि और न्यूक्लियस एठी मल्टीपल हे गेले तो गोटे सेल मल्टीपल न्यूक्लियस हो गेला तो सेल डिवाइड करन दैट इज अ एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स striated muscle fibers multinucleated and very long red blood cells in mammals are enucleated and maturity and nucleated at maturity bacterial cells lack membrane bound cell organelles viruses are considered as cellular organisms how many of the above can be considered as exceptions to modifying the classical cell theory केटा मॉडिफिकेशन केटा अछि पिला मन नजरे तीनटा मॉडिफिकेशन करछि bacterial cells lack membrane bound organelles striated muscle fiber multinucleated and very long red blood cells in ये किछि भी नथिला जिंस सब 3 I only did 15 questions and the rest I'll give in class for sure sir okay abu no doubt ठीक है तो question number 7 Saif 6 is saying 4 Chirasmita Das is saying 4 but na answer हो 3 देखिए काहे के 3 है ना striated muscle fibers are multinucleated and very long तो ये भी गोटे वो can be considered exceptions exception कथा कहला very long time red blood cells mammals and maturity bacterial cells lack membrane cell organelles that is 4 is the correct answer 4 is the correct answer yes Roman goes option 4 option D is the correct answer चारटा को किछि नथिला सेठी now atla answer some legend question prokaryotes तो मेरे आंसर को देखो in prokaryotes the nucleus is not considered a true nucleus nucleus को true nucleus बोले हमें कहि न था question number 8 the nucleus lacks a nucleus and it is not associated with histone proteins the corn of answer both A and R are true and R is not the correct explanation of A ठीक ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर हां then the resolution of a modern electron microscope compared to compound electron microscope कौन है वो now observe living cell greater detail now it distinguish between 2 points that are much closer together ताकि मुझे distinguish कर दे ही पारियो ज्यादा फायदा कोई cellular component would be visible under light microscope only after specific staining cell wall in onion peel nucleus in a cheek cell mitochondria in liver cell and ribosome in a bacterial cell onion peel cell wall तो normally दिखाई जो दरकार नहीं न्यूक्लियस तो चिक सेल देखाई जीव दरकार नहीं किछि आंसर होची माइटोकॉन्ड्रिया इन अ लिवर सेल मन रखिबो माइटोकॉन्ड्रिया को देखिया पई कि हमें को स्टेनिंग यूज करछे को आफ्टर स्टेनिंग कहछ ना ठीक तो को स्टेनिंग यूज करे स्टेनिंग रा ना हे गेला जानस ग्रीन पिलाना लिखि दबो जानस ग्रीन 9b 10 हला C 10C yes 9b 10C करेक्ट आंसर अछि 6 and 7 डाउट 6 and 7 को आसो बिका 6 and 7 पार्ट रे टिके पछु पे फेरीबा
6 and 7 ने multinuclear sinusoidal structure found in some algae and fungi. ये question answer कौन सा लाभिका ना हमारा कहला कि are an exception to the cell theory as they are not divided into cells. बुझ हबिका sinusoidic रो माने कौन? Sinusoidic word जो आसीगला एठी सिनो multinucleated sinusoidic आर माने हैला कि सेल अच्छी सेल भितर न्यूक्लियस अच्छी तो कौन हम सेल डिवाइड करिवो तो सेल डिवाइड करे पे न्यूक्लियस डिवाइड करिवो तो न्यूक्लियस डिवाइड कला पर ये गोटे सेल भितर केटा न्यूक्लियस हेगला जोड़ा न्यूक्लियस हेगला तो टेक्निकली अभी क्या कहा को डिवाइड करिवार थिला सेल को डिवाइड करिवार थिला बट इट इज सेल डिवाइड न करी कि इट इंस्टेड ऑफ सेल डिवीजन व्हाट इज हैपनिंग ये न्यूक्लियस पुन डिवाइड करी गला ये न्यूक्लियस पुन डिवाइड कर जाउची पुनी कोन होची एबे भी सेल डिवाइड करनी आगो जाइए पुनी न्यूक्लियस डिवाइड करची 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 तो ये जदि गोटे सेल रे गोटे न्यूक्लियस जगह रे one cell having one nucleus and now here one cell is having 8 nucleus so that is called as sinusoidic in nature now eta was good exception to the cell theory as they are not divided into cells ये सेल थ्योरी सपोर्ट करिवो कि करिवो नहीं और एक्सेप्शन बिकॉज़ दे अराइज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जनरेशन ही होने एंड सपोर्ट द सेल थ्योरी एज दे आर फॉर्म्ड बाय सेल फ्यूजन ना ये सपोर्ट तो को भी एंगल ले करिवो नहीं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड इट इज 7 नंबर क्वेश्चन में कहला कि चारटा ऑप्शन देछि ए बी सी डी हाउ मेनी ऑफ देम अबव आर कंसीडर्ड एक्सेप्शन ऑफ मॉडिफिकेशन क्लासिकल थ्योरी तो ये भी गोटे एक्सेप्शन ये भी गोटे एक्सेप्शन ये भी गोटे एक्सेप्शन ये भी गोटे एक्सेप्शन तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ये चला कर आई होप तुम एबे बुझी पाइलो आ बाकी सब रहला होमवर्क रहला तुम करि के आनथियो 10टा क्वेश्चन करली और 20टा क्वेश्चन तमर होमवर्क रहला ठीक अछि एटी तुम करि के आस्थिबो 10टा क्वेश्चन आंसर करथियो हम नेक्स्ट क्लास रे कहिबो रिपीट तो पठे दिस तमना बति की ठीक अछि ए क्वेश्चन आंसर तो रेडी कर रखिथिबो और नेक्स्ट क्लास रे So thank you so much for your kind attention and we'll definitely meet again. एबे जे करेंटली मु पठै पारिबि नाही एंड जदि आगु मते मिलिला मु डेफिनेटली तमने शेयर कर देबी से क्लास सब जगह सर आमी करिनु ठीक अछि तो से रेस्पेक्टिव सब नोडल ऑफिसर निहाते जणाई दे पारिबे ठीक तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम आई होप टू माने क्लास रे बुझी पारतो नेक्स्ट मोर जनो क्लास तो वेडनेसडे रे क्लास अछि सो नमे सेल द एंडोप्लाज्मिक थ्योरी पढिबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी in part to padibo so stay tuned for the next practice thank you so much for your attention very good well done Abbu congratulations thank you all of you